Right. So today we have to cover world history from the interwar period right up to the Cold War. Right. Another set of questions. The first question is with regards to the Treaty of Versailles. Question reads: the peacemakers of Paris, instead of building an edifice of peace, sowed the seeds of war. Discuss. Now, what is the demand of this question? बताइए, what do we need to do over here? We need to highlight the flaws of the Treaty of Versailles and link it to the Second World War. To know about the flaws of the Treaty of Versailles, we must be familiar with the provisions of the Treaty of Versailles. सबसे पहले तो ये बताओ, what was the Treaty of Versailles? When was it signed? Who were the signatories? क्या थे? It was the peace treaty concluded after the end of the First World War between the victorious powers and Germany. ठीक है, तो the victorious powers, इनमें कौन कौन से कंट्रीज के नाम आते हैं? The Big Four, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड अमेरिका. ठीक है, so these were the Big Four. What was the nature of this treaty? Had it been signed from a position of equality or had it been imposed upon Germany? It had been imposed upon Germany. Did Germany enjoy any right to negotiate with regards to the terms of the treaty? No, they had been made to sign the treaty at the point of the gun. Okay? So it was a forced treaty. And why do we say that it contained the seeds of war instead of creating an edifice for peace? What was the objective of this treaty? It was a peace treaty. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या होता है पीस ट्रीटी का? To restore normalcy and prevent the future escalation of conflict, to prevent future war. Right now, what was the strategy that the American President Woodrow Wilson had suggested? क्या सजेस्ट किया था उसने? He was the mastermind behind the League of Nations. He said that we must now create an enduring framework for global peace, that all the nations of the world must act responsibly, and with the commitment to prevent future war, we must try to address even small local conflicts as major global causes for concern. So छोटे bilateral conflict को resolve करने के लिए भी इंटरनेशनल लेवल पर कंसेंसस क्रिएट करना जरूरी है. राइट नाउ दिस आइडिया इज नोन एज इंटरनेशनलिज्म. ऑलराइट, और उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या इमर्ज होता है? द लीग ऑफ नेशंस. राइट नाउ इफ different countries were to interact with each other on the platform of the League of Nations, एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या था? that all of them should have equal say and status. ठीक है, तो वहां पे जूनियर सीनियर का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. But was that actually the spirit in which the Treaty of Versailles had been signed? No. The victorious powers, led by France particularly, were trying to strong arm Germany. They were trying to settle their age-old generational differences in the peace conference at Versailles, right? So वहां पे the peacemakers of Paris were not actually concluding a peace, but they were in fact concluding, or they were prosecuting the continuation of the First World War. They wanted to humiliate Germany, they wanted to weaken Germany, they wanted to punish Germany. ठीक है, तो एक फ्लॉ तो ये था कि वो जो नेसेसरी गुडविल होता है टू कंक्लूड एन एंड्योरिंग पीस ट्रीटी, दैट वाज एंटायरली मिसिंग. ठीक है, वो एजेंडा जो था पीस मेकर्स ऑफ पेरिस का, दैट इन इटसेल्फ
was the major cause of concern, was the major flaw over here. And this resulted in the emergence of a faulty peace treaty. What were some of the controversial provisions of the Treaty of Versailles which caused problems later on? क्या क्या थे? वॉर रेपरेशन वगैरह तो ठीक है. What happened to the territory of Germany proper? तोड़ दिया गया जर्मनी को. इनफैक्ट ईस्ट प्रशिया वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ जर्मनी. बीच में से एक पोलिश कॉरिडोर कार्व आउट कर दिया गया. द मेजर पोर्ट ऑफ डैनजिग इन द नॉर्थ सी, दैट वाज सॉरी इन द बाल्टिक सी, दैट वाज असाइन्ड टू पोलैंड नाउ, राइट. Further, the territory of Sudetenland was now given to Czechoslovakia. Alsace-Lorraine, which the Germans had won in the Franco-Prussian War in 1871, that was now given back to France. The region of Rhineland, that was completely demilitarized. For a period of 15 years, the region of Saar was put under French occupation. In fact, policing in the Rhineland region was also given, the right to police the Rhineland region was also given to the French. The German colonies, overseas colonies in West Asia and Africa, they were given to Britain and France, divided among them as league mandates. Okay? Do you think the people of Germany are going to be happy with this? No, they are going to be extremely angered by this. They are going to feel humiliated, right? Further, over and above this, First World War ने जर्मनी की इकोनॉमी को क्या किया था? It had completely decimated the German industrial output, industrial capacity. Germany needed to use what little meager resources it had left to rebuild its economy. Did the Treaty of Versailles give Germany the opportunity to do this? No. Why? Because a very impractical sum of 6,600 million pounds was set as the war indemnity to be paid out by Germany in equal installments of 100 million pounds each over the next 66 years. And what happened when Germans were not in a position to repay it? France ने क्या किया? It began occupying industrial regions of Germany, the coal mines of Germany, the iron and steel factories of Germany, in order to compensate for the inability of Germany to repay its war indemnity, to fulfill its indemnity clause. Okay? Now, who on behalf of Germany had signed the Treaty of Versailles, who had agreed to these terms? Was it the dispensation of the Kaiser or was it a new group? यानी कि जो लोग जर्मनी में वॉर को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वर दे आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, और वाज दिस अ न्यू ग्रुप? नया ग्रुप था, राइट. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर व्हाट हैड हैपेंड वाज, because of the wartime suffering and wartime shortages, there had been a great deal of radicalism within Germany. A sort of revolution had taken place, and socialist and democratic liberal groups had come together to overthrow the rule of the absolute Kaiser William II. He was forced to flee from Germany and he went to live in exile in England. Never returned from there after that, right? These people, the people who had successfully rebelled, they set up a new republic known as the Weimar Republic. They drafted for themselves a liberal constitution known as the Weimar Constitution, and it was they who had first gave indications for signing an armistice. They were the ones who had called for a ceasefire. So they were in fact responsible for ending the war and thus the suffering of the German people. But instead of rewarding them for ending the war, the peacemakers of Paris continued to punish them. Now, Germany, जहां पे पिछले 30 साल से लोग केवल nationalism की माला जप रहे थे, what is their attitude going to be towards these people who had signed such a humiliating and harsh treaty on behalf of their country with the peacemakers of Paris, with the victorious powers? Positive or negative? Negative. वो तो देश के गद्दार माने जाएंगे. And this idea was used by extremist groups such as the Nationalist Socialist Party, Hitler's party, to label the Weimar Republic and the liberal politicians, socialist and Jewish groups as November criminals.
they started to propagate the myth that Germany actually field पे हारा नहीं था. Germany had been stabbed in the back. पीठ में खंजर भोग दिया गया था by its own people. And who were these people? The so-called November criminals. तो अब जर्मनी का जो नया रिलेशनशिप शुरू हुआ था with liberalism, socialism, democracy, is that going to be a healthy and long-lasting relationship? No, that is going to be a very brief tryst. Germany is going to default to its original position of absolutism, extreme nationalism, and क्योंकि उसको लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी से इतना बड़ा झटका मिला, द perceived shock was so huge, the pendulum is going to swing very far to the other extreme. ठीक है, so extreme nationalism, extreme statism, one man dictatorship, etc. ये सब आने लग जाएगा, right? Totalitarian regime of Hitler is going to be established. And what kind of policy is Hitler going to promise? Mein Kampf में क्या बोला उसने? What is his highest objective in life? To restore Germany to glory, to establish a 1,000-year Reich, to violate the Treaty of Versailles, and to avenge German humiliation by punishing France. ठीक है, तो फ्रांस को मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसा उसका प्रॉमिस था. And would this be achieved by peaceful means or by violent means necessarily? Necessarily violent means. अब हिटलर जैसे इंसान को जर्मनी में फ्यूरर की गद्दी तक पहुंचाने के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साई ने बहुत अहम भूमिका निभाई. ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वर्साई प्लेड द सेमिनल रोल इन एलिवेटिंग अ पर्सन लाइक हिटलर टू द स्टेटस ऑफ द कंट्रीज सुप्रीम लीडर, इट्स फ्यूरर. And Hitler was almost single-handedly responsible for precipitating the conditions that led to the Second World War. Okay? So this is the way in which the Treaty of Versailles, instead of constructing the edifice of peace, sowed the seeds of war. अच्छा, एक और एंगल इसमें आप ऐड कर सकते हो. What happened later on in the liberal Western powers, Western democracies, that is the British and the French, that a slow realization started to emerge that we have probably mistreated Germany. इतना harshly treat नहीं करना चाहिए था. In fact, they started to realize the flaws of the Treaty of Versailles, that if we want a stable and peaceful Europe, Germany must be allowed to regain some of her old strength, some of her old vigor, some of her own economic, you can say, प्रॉस्पेरिटी. वाई? क्योंकि दूसरे साइड पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था ईस्टर्न यूरोप में? The USSR had been established after a successful communist revolution. USSR had emerged as a watchtower from where communist ideology and agents were being broadcast into the rest of Europe, right? और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के लिए अब सबसे बड़ा खतरा क्या था? Was it Germany or was it the USSR? It was the USSR. And therefore, they began to soften their attitude towards the Germans as well. Had they originally adopted a soft attitude towards Germany, Germany would have remained a strong ally against communist aggression from the East. But now they had to win over Germany. So, अब एक dramatic polarization of policy होगा towards Germany. पहले क्या था? Extreme punishment. Now there is going to be extreme appeasement. ठीक है? So the Western democracies ended up trying to correct the mistakes that they had made by adopting a very liberal policy of appeasement towards totalitarian dictators such as Hitler and Mussolini, which definitely contributed towards pushing Europe closer and closer towards the Second World War. So these are the fatal flaws of the Treaty of Versailles. ठीक है? And introduction कैसे करना चाहिए हमें इसका? क्या कर सकते हैं? What can be a good way to begin this answer? We can talk about the Paris Peace Conference. Organized between 1919 and 1920 in various locations of Paris. They involved the victorious powers on one side
that is Britain, France, the USA, and Italy, and the vanquished powers on the other, including Germany, Austria, Bulgaria, and the Ottoman Empire, on whom forcible treaties were enforced, such as the Treaty of Versailles with Germany, Saint-Germain with Paris, Trianon with Bulgaria, and Sevres with the Ottomans. Out of these, the Treaty of Versailles proved to be the most problematic, since it directly contributed to sowing the seeds of the Second World War. ठीक है? Separate peace treaties were imposed upon these. And आगे क्या लिखना है इसके बाद? It contained a number of critical flaws, such as, और उसके बाद come to the main body, enumerate the flaws, and finally conclusion. क्या करना चाहिए? In fact, you can talk about, और ट्रीटी ऑफ वर्साई कौन सी वॉर के बाद हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी पीस ट्रीटी हो सकता था इस तरह का, राइट? इनफैक्ट द यूएसएसआर एंड स्टालिन were adamant on a very harsh treaty for Germany, one which was even harsher than the Treaty of Versailles. Who stepped in to prevent this from happening? The Americans stepped in. The American president, Harry S. Truman, insisted upon a mild treaty. Why? Because he was well aware of the disadvantages of imposing a harsh treaty upon a proud nation with a strong military history. Okay? So, because the Americans had learned the lessons of history, they were careful not to repeat it. Clear है? तो इसके बारे में बात कर सकते हो. Learning valuable lessons from previous errors. The Americans prevented a harsh treaty from being imposed on Germany after the Second World War. Thus laying the groundwork for enduring peace in Europe. Full stop. ठीक है, ये हो गया ट्रीटी ऑफ वर्साई वाला क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. The causes of the Bolshevik Revolution were inherent in the pattern of Russian industrialization. Examine. So, what is the demand of this particular question? क्या करना है हमें? Yes, we need to establish the linkages between the way in which Russian industrialization took place and the communist uprising, that is the Bolshevik Revolution. तो हमें ये दिखाना है कि in a country like 19th or early 20th century Russia,
whenever industrialization took place, कोई ना कोई major uprising होती ही होती. How it was inherent. So what were those flaws with the Russian industrialization which made a communist uprising inevitable? बताइए. Did Russia follow the traditional method of industrialization जो कि ब्रिटेन और अमेरिका में फॉलो हुआ था, कि प्राइवेट कैपिटल आएगा, फ्री एंटरप्राइज होगा, स्टेट जो है इंटरवीन नहीं करेगा इकोनॉमी में, और डिड द रशियंस टेक द एग्जैक्ट ऑपोजिट अप्रोच? The Russians took the exact opposite approach. Russian industrialization, in earnest, it started from 1861 onwards. What happened in 1861? The Russian Emperor Tsar Alexander II abolished not slavery but serfdom. ठीक है. बिफोर दिस रशियन इकोनॉमी का पिक्चर कैसा दिखता था? इट वॉज प्राइमरीली एन अग्रेरियन इकोनॉमी, राइट? अग्रेरियन स्ट्रक्चर कैसा होता था? Was the Russian society a free peasant society or was it a serf society? Serf society. All the land and power in the rural setting was concentrated in the hands of large feudal lords. ठीक है? So before the Russian agrarian society was characterized by a serf society. Did there exist a sizable middle class or not? नहीं होता था. इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ट्रेड एंड नहीं है, ट्रेड एंड कॉमर्स इज suppressed. So the middle class was almost absent. Did Russia have the basic physical ingredients for rapid industrialization or not? No, it did not. Major limiting factors क्या थे? Communication infrastructure बिल्कुल भी नहीं था, and the climate was extremely harsh. While Russia had rich mineral resources of coal and iron deposits, they were too remote or too difficult to access. ठीक है? So Russia lacked the basic physical necessities for rapid industrialization. ठीक है? However, the Russian administration, the Russian government led by Alexander II, also knew that if Russia did not quickly catch up to the rest of Europe, it would be left so far behind that it will never be able to catch up. Therefore, they were committed to the idea of rapid industrialization. In this scenario, Alexander II's finance minister, his name was Sergei Witte. I'm sure I'm mispronouncing his name, लेकिन कोई बात नहीं, लिखना ठीक है, बोल चाहे जैसे भी लो. Right? He advocated
that for Russia to industrialize, it must use what is known as the Gershon-Kron model. Gershon-Kron was a German economist whose writings were quite popular in in Russian intellectual circles during the late 19th century. इसने क्या बोला? What does this model advocate for? That the latecomers to industrialization should they follow the traditional path towards industrialization or their own path? Should follow their own path to industrialization. And who should take the lead in overcoming the hurdles or gaps necessary for quick industrialization? The state. So it should be not only state sponsored, but state led industrialization. प्रॉब्लम क्या हुआ इसकी वजह से? स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से you get public sector undertakings such as BSNL. Now, can a BSNL ever hope to successfully compete with private enterprises such as Jio or Airtel etc.? नहीं हो सकता है. वही होगा जो BSNL के साथ हुआ, right? It will be broken up into parts. जितना भी उसका equipment है, that will be sold off. जो उसका spectrum है, that is going to be assigned to other private players. वो सब होगा. Why? Because public sector undertakings by their very nature are lethargic and inefficient. क्यों? उनको स्टेट का बजटरी सपोर्ट मिलता है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कम होता है. उनको पता है कि अगर पैसा बर्बाद भी हो जाए तो कोई बात नहीं, खजाने से निकाल लेंगे. और कैन द सेम बी सेड फॉर पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस? नहीं, राइट? तो वहां पे पब्लिक अंडरटेकिंग्स में करप्शन ज्यादा होगा, लीकेज ज्यादा होगा, वेस्टेज ज्यादा होगा, इनएफिशिएंसी ज्यादा होता है. तो ये जो रशिया का प्रपोज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ये कभी भी उतना रैपिड हो पाएगा जितना इसके पीछे जो ब्रेन्स थे उन्होंने होप किया था? नो. सो ग्रोथ remained slow. Now, industrialization in the beginning is painful for every country that goes through it. क्यों? Because it involves the process of destruction of established economic systems. यानी कि जो रूरल इकोनॉमी होगी, that is going to be stripped of its excess labor. वहां पे लेबर शॉर्टेजेस हो जाएंगे, राइट? बट एंड में होता क्या है? The economic profile of the residents of the entire country that lifts up because of economic growth and its distribution. अब यहाँ पे क्योंकि growth slow रहा, तो जो long term benefits थे, was Russia ever able to experience those? No. Therefore, the economic condition of the people remained poor. Now, since the Russian industrialization was a state-led process, was it able to produce or create a large and wealthy class of middle-class industrialists? नहीं. तो जो power थी, that remained concentrated in the hands of the autocratic Russian state and the large feudal lords, right? Middle class emerge नहीं हो पाया.
What had the middle class done after emerging in Western Europe in places such as France or Britain? क्या किया था इन्होंने? Did they have any impact on the polity, internal political system? Yes. क्या हुआ था? Democracy had deepened, constitutionalism had emerged, right? इस तरह के liberal progressive changes. Are those changes going to take place in Russia, or is Russia going to remain the same feudal and medieval polity of its past? Same रहेगा, ठीक है? So, no middle class, and thus no liberal political reforms. एंड इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? The poor, the industrial workers, they are going to suffer the most. Why? Because Western democracies में the state was forced to reform the industrial sector, right? As it democratized further, as the voices of the workers began to influence national politics. But यहाँ पे क्योंकि voices of the workers were suppressed by the state, therefore no democratic reforms or industrial regulation took place. ठीक है? So since there was no democratization, therefore workers' interests remained neglected. Are workers going to be happy with this situation? खुश होंगे? नहीं. So levels of dissatisfaction are going to remain permanently high. And sporadic level पर violence is also going to break out. How is the state going to respond to this violence? Crackdown, complete crackdown. It is going to use its police and military apparatus to suppress any dissent from the working population. So, ruthless suppression of workers' voices is going to be done. Further, in a normal scenario, जब industrialization होता है, तो it functions on the basis of the invisible hand of the market. जहां पे भी सप्लाई डिमांड का सिनारियो ऑप्टिमम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के पोटेंशियल दिखाता है, वहां पे प्रोडक्शन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है. बट रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ स्टेट लेड प्रोसेस. तो यहाँ पे भी रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और स्टेट डिसाइड करेगा कि कौन से सेक्टर को कितने रिसोर्सेज मिलने चाहिए. स्टेट इज गोइंग टू डिसाइड. Therefore, some sectors of the industrial economy are going to become overdeveloped while the others remain underdeveloped. State कौन सी priorities को fulfill करना चाहेगा? Its own infrastructure, its own defense industry, etc. These kinds of things the state is going to focus on. Which sectors are going to be neglected as a result? Consumer goods industry. ठीक है? So there is going to be an acute shortage of consumer goods. In fact, जो manufactured items of daily use होते हैं, essential goods होते हैं, उनका shortage भी होगा. Prices are going to be extremely high also. For the bulk of the population, they are going to be permanently out of their reach. So the Russian population by and large is going to experience acute levels of resource shortage and deprivation also. ठीक है? So इसको हम बोल सकते हैं that there is shortage of consumer goods and resource deprivation.
What happens when a top-down approach to industrial development takes place? Does balanced regional growth take place or unbalanced regional growth take place? Unbalanced regional growth takes place. Result क्या होगा इसका? That while some cities such as St. Petersburg or Moscow witnessed rapid industrialization, the vast tracts of Russia's interior remain deindustrialized till the very end. एंड यहाँ पे जो पेजेंट्स हैं उनकी कंडीशन क्या होगी? अब इंप्रूव होगी और खराब हो जाएगी, और खराब हो जाएगी. तो अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ इज गोइंग टू टेक प्लेस. तो अब ये बताइए, will the political landscape of Russia prove to be a fertile ground for extremist ideologies, or will Russia remain hostile to radical ideologies? Fertile ground होगा. क्यों? People are not only experiencing chronic and a very high level of suffering, they also do not have any confidence in the government to resolve the problem that they are suffering from. ठीक है? तो ऐसे में जो वर्कर्स को सपोर्ट करने वाली आइडियोलॉजी है, कौन सी आइडियोलॉजी? सोशलिज्म और कम्युनिज्म. दैट इज गोइंग टू फाइंड अ नंबर ऑफ एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स इन रशिया. ठीक है? हु इज गोइंग टू लीड दिस चार्ज? Lenin. What is he going to advocate for? The overthrow of the Tsarist regime and a blood revolution, creation of a socialist state to redistribute the factors of production. ठीक है? And what allowed Lenin to conduct mass hypnosis on such a large level across Russia in a relatively short period of time? 1916 में he was in exile in Switzerland. He was allowed to come back 1917 में इनफैक्ट, और कुछ ही महीनों में, 8-10 महीनों में, he had now taken control of the reins of power. What allowed him to do this? नहीं, because लोग already भरे हुए बैठे थे. They were primed for change. He simply needed to turn the key. गाड़ी was primed, उसमें फ्यूल पूरा भरा हुआ था, डाउनहिल खड़ा हुआ था, उसको केवल हैंड ब्रेक रिलीज करना था. That is all that he did. And what had created such a radical situation, revolutionary situation? It was the nature of Russian industrialization. ठीक है? So that is what we need to establish over here. शुरुआत कैसे करनी है इस आंसर की? सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे, राइट? बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या था, कब हुआ, एंड व्हाट केम आफ्टर इट. साथ में और क्या बात करनी पड़ेगी? That it was closely linked to the nature of Russian industrialization. ठीक है? फिर उसके बाद you will highlight how it was closely linked to the nature of Russian industrialization. Then conclusion. Conclude कैसे कर सकते हैं इस आंसर को? बताइए. That the Bolshevik Revolution was the first practical expression of the ideas of Marx, and it elevated Marx to the level of a prophet, right? जैसे कि जीसस क्राइस्ट प्रॉफिट मोहम्मद को बोलते हैं ना, उस तरह का प्रॉफिट, बिकॉज ही हैड एक्चुअली मेड अ प्रोफेसी. क्या? कि वॉर के समय पर जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, दे आर गोइंग टू फेस देयर वर्स्ट क्राइसिस, एंड यहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस होंगे. ठीक है? और इसके बाद क्या हुआ? बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद not only did the USSR emerge as a major global superpower, but it also began to export the socialist ideology very aggressively across the world. So it set the stage for an ideological conflict which would bring transformational changes to the whole of the world. In fact, late 20th century ka history, it has been dominated by this ideological conflict in the form of the Cold War. So we can talk about the long-term implications of the Bolshevik Revolution. Clear? आगे चले.
Question number 27. The League of Nations failed entirely to fulfill its remit. Critically evaluate critically. What is the demand of this particular question? क्वेश्चन समझ में आया है पहले? क्या है? लीग ऑफ नेशंस कंप्लीट फेलियर था या नहीं था, ये बताना है. ठीक है. तो इट फेल्ड टू फुलफिल इट्स रिमिट एंटायरली इवैल्यूएट क्रिटिकली. ठीक है. तो बिफोर वी कैन असेस वेदर द लीग ऑफ नेशंस वाज अ कंप्लीट फेलियर और नॉट, क्या जानना जरूरी है कि उसका रिमिट क्या था. व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स दैट इट हैड सेट फॉर इटसेल्फ. So what were the objectives? What was the idea behind the introduction of the League of Nations? Peace and disarmament, addressing not only active conflict in the form of bilateral or multilateral wars, but even the root causes of conflict, such as the violation of international agreements, the violation of international borders, the violation of economic norms, etc. ये सब. And then peace had to be ensured not only between countries but within countries also. How to ensure that? क्लास रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जेंडर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना पड़ेगा. विल हैव टू मेक adjustments in our society so that the exploitation of human beings by other human beings is no longer possible. Law and order को, system of justice को और robust बनाना पड़ेगा so that there is no exploitation, the cycle of humiliation and vengeance that should be ended. These kinds of changes would have to be done. How did the league set about doing this? क्या framework बनाया उसने? जनरल असेंबली बनाया, सेक्रेटेरिएट बनाया, और क्या बनाया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वर्ल्ड कोड बनाया, राइट. दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स वर सेटअप. आइडिया क्या था? जनरल असेंबली में every country would have equality and it would enjoy one vote. All major disputes are going to be brought before the council and will be settled internationally through the principle of majority voting. Secretariat was supposed to be the administrative body, the executive body of the league. Then there was a council as well. Council में 4 members. कौन? Britain, France, Italy and Japan. What was the idea over here? That they are going to be the guarantees of the league. ठीक है. तो अगर कोई भी पीस को वायलेट करता है and if the league passes an injunction for them to stop their activities, so who is going to enforce the directives of the league? It is going to be these major powers. That was the idea over there. Then world court का काम क्या था? कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है, मान लो कोई राइपेरियन डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, who is going to settle it? That international court is going to settle it. And trusteeship council का क्या काम था, या मैंडेट काउंसिल? ये जो न्यूली लिबरेटेड कंट्रीज हैं which have been taken away from Germany or Austria etc. or the Ottomans, they are going to be mandate or they are going to be governed by league appointees. They will be prepared for self-government and then liberated. That was the idea. तो प्लान तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव था. Why did the league fail? क्योंकि जो स्पिरिट था लीग का, व्हाट वाज दैट स्पिरिट? द एसेंस ऑफ दैट स्पिरिट वाज द आइडिया ऑफ इंटरनेशनलिज्म. ठीक है. लेकिन यूरोप जो कि जिसने की पूरी 19th सेंचुरी नेशनलिज्म के नशे में बिताई थी, it was still unable to emerge out of the hangover of nationalism. So there was a mismatch of spirit between the objectives of the league and the actual you can say objectives of its major powers, that is the big 4: Britain, France, Japan and Italy. In fact, अगर आप देखोगे तो 1920 से लेकर 1939 तक सबसे बिगेस्ट वायलेटर्स ऑफ पीस भी यही कंट्रीज थी. तो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज द प्रोटेक्टर्स ऑफ द लीग, दे वर एक्टिंग एज द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द लीग. ठीक है. द लीग डिड सक्सीड in resolving some minor disputes, but these were disputes between weaker, smaller nations.
ठीक है, जब बड़े नेशंस के बीच में डिस्प्यूट आता था, द लीग प्रूव्ड एंटायरली इनएफेक्टिव। डिड द लीग हैव एनी परमानेंट फोर्स ऑफ इट्स ओन? नहीं था। सो इट वाज अ टूथलेस टाइगर। मान लो कोई गुंडा है आपके शहर में, घुस आया है, लोगों को गाड़ी रोक करके मार रहा है, तो किसको बुलाओगे आप? फोन किसको करोगे? पुलिस को, थानेदार। अब थानेदार को आपने फोन किया तो पता चला कि कनेक्शन मिल ही नहीं रहा है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपने जो लॉ बनाया हुआ है उसका कोई मतलब रह गया? नहीं रह गया। ठीक है, द लीग वाज कंप्लीटली अ टूथलेस टाइगर बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जो दो सबसे बड़े मेजर पावर्स इमर्ज हुए थे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हु वर दे? द यूएसए एंड द यूएसएसआर। हैड दे जॉइंड द लीग? नो। यूएसए का जो कांग्रेस था, दैट हैड फेल्ड टू रैटिफाई द अग्रीमेंट टू जॉइन द लीग ऑफ नेशंस, और यूएसएसआर को 1933 तक रिकग्निशन ही नहीं मिला फ्रॉम द and its other members. So it was not ever invited to join the League of Nations. Now, if the two main superpowers of the world are not part of any organization, international organization, उसका कोई मतलब रह जाता है? नहीं, उसका वही हाल होगा जो अपने नाम के साथ हुआ, राइट? कहने को तो उसमें 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन इंडिया के बाहर या फिर कुछ कंट्रीज के बाहर उसका नाम भी कोई जानता है नॉन अलाइन मूवमेंट का? नहीं, प्रॉब्ली नॉट, राइट? सो द सेम थिंग इज व्हाट हैपेंड टू द लीग ऑल्सो। और बताइए क्या फ्लॉ है? लीग क्या चीजें यूज करती थी टू पनिश द वायलेटर्स ऑफ द पीस? एक्सट्रीम एक्शन वुड बी मिलिट्री इंटरवेंशन। वो पॉसिबल था नहीं क्योंकि कोई नेटो जैसा मिलिट्री कोएलिशन नहीं एग्जिस्ट करता था, राइट? सेकंड मोस्ट एक्सट्रीम स्टेप वुड बी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देना, राइट? लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शंस अगर जापान के ऊपर लगते हैं तो विल दे नॉट हार्म द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इटली, ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो? They will, and that is why even though the league and its members advocated for economic sanctions, they were never actually enforced. तीसरा एक्शन क्या हो सकता है? कि डिप्लोमेटिकली किसी कंट्री को आइसोलेट कर दो, टू एक्सपेल देयर डिप्लोमेट्स फ्रॉम योर कंट्री। उससे कोई एक्चुअल फायदा होगा? इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग रिलेशन, दैट इज गोइंग टू फर्दर क्रिएट टेंशंस एंड हार्म रिलेशंस। और क्या एक्शन हो सकता है? डिमार्श लिख के भेज दो, कॉन्डेमनेशन कर दो, उससे किसी को फर्क पड़ने वाला है? सम पर्सन हु इज हेल बेंट, फॉर एग्जांपल पुतिन, हु इज हेल बेंट ऑन कॉन्करिंग द डॉनबास रीजन राइट नाउ, उसको कोई फर्क पड़ रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया और कम्युनिटी में उसको कॉन्डेमनेशन मिल रहा है? नहीं, उस समय भी सेम चीजें। तो द लीग डिड नॉट हैव एनी मींस टू इन्फोर्स द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, दैट इज व्हाई इट फेल्ड। अब हमको ये एनालाइज करना है whether it was a complete failure या फिर कुछ redeeming qualities थी। कुछ redeeming qualities थी इसके बाद। क्या? While the league failed, the idea of internationalism did not. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक renewed effort हुआ to manifest internationalism in the form of a new international organization. कौन सा? the UNO। वो उसका काम एज कंपेयर टू द लीग काफी सैटिस्फैक्टरी रहा है हिस्टोरिकली। ठीक है, फर्दर अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ द लीग इज द वर्ल्ड कोर्ट। इन द यूनाइटेड नेशंस इट बिकेम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, कई सारे बायलैटरल इश्यूज, मल्टीलैटरल इश्यूज को इट हैज रिजॉल्व। इन द केस ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडस वाटर्स ट्रीटी। ठीक है, अच्छा, देन अनदर सक्सेस स्टोरी इज द ILO। ILO का काम क्या है? टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। इट हैज बीन एबल थ्रू इट्स एडवोकेसी एंड इट्स गाइडेंस to guide the labor policies of various member countries, including India also. So some safeguards have been brought in democratic countries to protect the interests of the workers. इसका फायदा क्या हुआ है? जो गैप है between the workers and the others, that has been reduced. The social disharmony that was existing because of the economic gap and the class gap, that has been reduced and greater stability has been induced as a result. ठीक है, तो कुछ चीजों में तो सक्सेसफुल रहा है। तो कैन दी लीग बी कॉल्ड अ कंप्लीट फेलियर? नो, इट डिड फेल बट वाज नॉट अ कंप्लीट। शुरुआत कैसे करनी है इसकी? इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? लीग ऑफ नेशन कब बना?
what was the idea behind it, who was the mastermind. आइडिया क्या था इसके पीछे? The idea of internationalism. Who was the mastermind? Woodrow Wilson, the American president. Then what do we need to do? Second portion क्या होना चाहिए आपके आंसर का इंट्रोडक्शन के बाद? Objectives of the league क्या क्या हैं? Enumerate those. Then the mechanisms through which the objectives were supposed to be fulfilled, the organs of the league, and then its laws followed by the mediating factors. कुछ successes भी थे. And then you come to the conclusion. Conclusion में क्या करना होगा यहाँ पर? Since the question is asking you to critically evaluate the statement, फाइनल जजमेंट प्रोड्यूस करना होगा. क्या ये कंप्लीट फेलियर था कि नहीं था? क्या बोलोगे? नहीं था. While the league was unable to prevent the Second World War, which was its main objective, it should still not be considered a complete failure. It had some elements which left behind an enduring legacy, and since the Second World War have provided a major semblance of stability in the world. ठीक है? So that is the note on which we can continue. Clear? आगे बढ़े. Question number 28. Now, it reads, what was the Great Depression? How did it shape 20th century history? I think you should attempt to write this question on your own first. And then we can discuss it. I'm putting 9 minutes on the board. Shall I start the timer? Time starts. तो जी बताइए क्या है ग्रेट डिप्रेशन? शार्प डाउनफॉल इन द इकोनॉमी. डिप्रेशन का टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है इकोनॉमिक डिप्रेशन का? नेगेटिव ग्रोथ फॉर 2 consecutive quarters, राइट? अच्छा, तो ग्रेट डिप्रेशन किस एपिसोड को बोलते हैं? द rapid decline of the American economy which radiated across the world beginning from October 1929. ठीक है? सो ये हो गया what was the Great Depression. So definition of the Great Depression you should write in the introduction along with the time period (1929) से लेकर के the earliest efforts to reverse the Great Depression were made in 1933, but in the true sense the Great Depression could not be ended till the beginning of the Second World War. ठीक है? सेकेंड पोर्शन क्या है इस क्वेश्चन का? हाउ डिड इट शेप 20th century history? So first of all we need to determine कि हम किन पैरामीटर्स पे 20th century history को डिस्कस करने वाले हैं. What should be the parameters on which the impact of the Great Depression on history should be analyzed? Political और इकोनॉमिक और सोशियो कल्चर. ठीक है? Now, what were the political implications of the Great Depression on world history during the 20th century?
क्या होगा इसकी वजह से? पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? कैन यू लिंक द ग्रेट डिप्रेशन टू द राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म इन यूरोप? कैसे? Italy and Germany were still to recover from the shock of the First World War. Right? Now, beginning from 1925 onwards, they had been becoming increasingly reliant upon American loans to rebuild their economy. Now, American money आना शुरू हुआ, the German economy started to recover slowly. जो war time reparations के provisions थे, they were also relaxed, right? तो जो installment of 100 million pounds per year था, they were not supposed to give that. It was deferred for a particular period, right? So recovery started to take place. But Germany was and Italy, they were still in the initial phase of recovery. What happened after the American banks collapsed? Are they going to continue sending money or will they want to recover all their loans? They asked to recover all their loans. And as soon as they did that, what happened to the German and Italian economy? They also collapsed completely. There was overprinting of money, hyperinflation, and the government also came on the verge of collapse. Who is going to be blamed for all of this? The Weimar Republic and the democratic government in Italy, right? Now, इसका फायदा कौन उठाएगा? The radical opportunists such as Hitler and Mussolini, right? And they are going to use the incendiary situation to their advantage. Since unemployment is extremely high, since there is a great degree of recidivism, they are going to simply channelize their economy on their intended targets. वो कौन होंगे? Democratic institutions and democratic leaders. ठीक है? So rise of totalitarianism in Europe is going to become a reality. And what are going to be the long-term implications of the rise of totalitarianism? Another war. Which war? The Second World War. और क्या implications होंगे इसके? सही है? Political implications. When capitalism started showing weakness, तो इसका फायदा किस आइडियोलॉजी को मिलेगा? Socialism, ठीक है, और communism. The Russian economy with its socialist model continued to register double-digit growth throughout the entire period of the Great Depression. Therefore, it became extremely attractive to other peoples. Okay? So, the rising influence of socialism is not only going to threaten the capitalist countries who are going to adopt a policy of appeasement towards totalitarianism, which is going to push Europe closer towards the war, but it is also going to push Europe and the entire world towards a larger ideological conflict. कौन सा? The Cold War, जो कि 1945 के बाद शुरू होता है. Now, the American economy had become deeply interlinked not only with the German and the Italian economy, but the European economy as a whole. And as soon as the American economy collapsed, their economies, Britain, France, etc., उनकी economies भी collapse. Are they going to bear the burden of this economic collapse or are they going to shift it on their colonies? They are going to shift it on their colonies. Colonial exploitation is going to increase. And as colonial exploitation increases,
opposition against colonial exploitation, that is also going to intensify. तो मॉडर्न इंडिया में हमने क्या देखा था? देयर वाज अ फेज ऑफ इंटेंस पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर discontent, resulting in major national movements such as the Khilafat and non-cooperation movements. This was part of an entire wave of anti-colonial movements across Asia and Africa. Okay? So there is going to be a strong way of anti-colonialism. ये हो गए पॉलिटिकल चेंजेस. इकोनॉमिक चेंजेस बताइए जरा क्या होंगे. जो स्मिथसोनियन मॉडल ऑफ लार्जेस्ट फेयर था, that has now shown its weaknesses. Are the different capitalist powers of the world going to continue practicing Smith's model of economy, or are they going to make adjustments? Smithsonian model is going to be discarded in favor of Keynesian model of economics. क्या है Keynesian model? State must intervene in order to revive growth. How? By pumping the economy full of liquidity, full of money, by creating job, by increasing demand, etc. ठीक है. और बताओ क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होंगे इसके? What is going to happen? A high level of unemployment, inflation. That is going to take place. Is the agricultural sector going to remain immune to the Great Depression, or is it going to be affected also? It is also going to be affected. Why? Because the nature of agriculture had also transformed since the end of the First World War. अब मैकेनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियल लेवल पे एग्रीकल्चर शुरू हो गया था. यहाँ पे भी कैपिटल का जो नेसेसिटी था, that had gone up. Therefore, the agricultural sector had also been linked to the financial institutions. And since they collapsed, तो यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है. Now, the agricultural sector was hurt not only because of the collapse of financial institutions. It was hurt in another way. कैसे? हाँ, because people lost their jobs, demand for agricultural products collapsed. Prices इसकी वजह से, जब डिमांड कोलैप्स होता है तो प्राइसेस बढ़ेंगे या नीचे आएंगे? अरे लोअर द डिमांड लेसर द प्राइसेस. ठीक है. तो प्राइस कोलैप्स हो जाएगा. However, by this point of time, the American agricultural economy had organized itself into powerful lobbies. So wheat lobby, corn lobby, sugar lobby, etc., tobacco lobby, ये सब emerge हो गए थे. Are they going to tolerate the collapse of their prices? No, because it would mean the loss of profitability. So instead of selling their excessive produce on cheap prices, they began to destroy their crops. ठीक है. एंड एक जहां पे सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, दूसरी जगह पर क्या होने लग जाएगा? फैमिन लाइक सिचुएशन इज गोइंग टू इमर्ज. और ये फैमिन किन एरियाज को इफेक्ट करेगा? रिसोर्स रिच रीजन, रिसोर्स स्टेबल रीजन सच एज द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, और द रिसोर्स पुअर रीजन सच एज एशिया एंड अफ्रीका. रिसोर्स पुअर रीजन. ठीक है. सो agricultural collapse and famine is also going to take place. Right? Then several countries inspired by the model of the USSR are also going to start adopting what? Socialist methods of economic organization, namely इकोनॉमिक प्लानिंग. ठीक है.
कहाँ पे इमर्ज होकर के आएगा? नॉट ओनली इन द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज सच एज इंडिया, जहाँ पे बॉम्बे प्लान, न्यू इकोनॉमिक प्लान, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी ड्राफ्टेड, बट ऑल्सो इन अमेरिका, capitalist countries as well. Certain degree of economic planning is going to take place. The states control over the financial institutions, ये अब हटा दिया जाएगा और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, so that the capitalist economy does not have to face such major shocks such as the Great Depression. So economic regulation is also going to be introduced. For example, क्या होगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जो अमेरिका का सेबी है, वो इमर्ज होकर के आएगा इन द वेक ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन. द फेडरल रिजर्व बैंक इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश, सेंट्रल बैंकिंग के इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जाएंगे. दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी डन. ठीक है. फर्दर, नाउ द स्टेट इज गोइंग टू रियलाइज दैट इवन इफ द बॉटम फॉल्स आउट एंड मान लो आप स्काई डाइविंग के लिए गए हुए हो, योर प्राइमरी पैराशूट डज नॉट वर्क, तो हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए? सेकेंडरी पैराशूट होना चाहिए, इमरजेंसी पैराशूट होना चाहिए, राइट? इन्होंने क्या रियलाइज किया कि यार हमारे सिटीजन के पास तो सेकेंडरी पैराशूट है ही नहीं. अब क्या करना पड़ेगा? अ सोशल सिक्योरिटी नेट वुड हैव टू बी क्रिएटेड. ठीक है. तो सोशल सिक्योरिटी का आइडिया इमर्ज होकर के आएगा. कहां पे होती है सबसे पहले शुरुआत? वंस अगेन अमेरिका में, but then other western countries and later after independence the newly independent countries are also going to adopt this. ये हो गए इकोनॉमिक implications. सोशो कल्चरल implications. Are class dynamics and race relations, gender relations going to remain the same following the Great Depression, or are they going to experience a fundamental change? Fundamental change. क्यों? वंस अगेन आप लिंक कर सकते हो इसको विद द राइज ऑफ सोशलिज्म से. नाउ सोशलिज्म वाज अ न्यू आइडियोलॉजी दैट वाज ट्राइंग टू गेन सब्सक्राइबर्स, सो इट वांटेड टू क्रिएट अ कोalition ऑफ सपोर्टर्स. तो उसमें केवल वर्कर्स या पेजेंट्स नहीं हो सकते, इट वुड नीड other people who historically have been oppressed, who have been dispossessed, underprivileged. तो ये किसको किसको एनरोप करने की कोशिश करेंगे? ऐसे जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी सेक्शंस ऑफ दिस सोसाइटी हैं, who have been let down by the established institutions, the socio-economic and political institutions. So socialists are going to create a coalition with women, for example, with racial minorities, with the blacks, with Africans, with let us say religious minorities, with the depressed classes, right? तो ये सबका एक coalition emerge होकर के आएगा. And what is it going to do? It is going to give a voice to these historically dispossessed classes for the first time at the national and international level. It is going to elevate their profile at the international level for the first time. Okay? So the emergence of feminist, black, Dalit, and religious minorities movements is going to experience a major acceleration. एग्जाम्पल्स इंडिया में दलित मूवमेंट का बात कर लीजिए आप, या फिर जो सिविल राइट्स मूवमेंट है अमेरिका में, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट है साउथ अफ्रीका में, उसकी बात कर लीजिए. ऑल ऑफ देम हैड क्लोज रिलेशंस विद सोशलिज्म. ठीक है. और क्या सोशो कल्चरल इम्पैक्ट हो सकता है? पॉपुलर कल्चर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? the types of literature, the types of drama, the types of films, songs, etc. Subaltern perspective not only in academics but also in the popular culture. तो
पहले किसकी कहानी दिखाई जाती थी? राजा हरिश्चंद्र, और उसके बाद लावारिस, दीवार, बिल्ला नंबर 786, कुली, राइट? दीज काइंड्स ऑफ फिल्म्स आर गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग प्लेस। मदर इंडिया, उसमें विलन कौन है? मनी लेंडर, राइट? और हीरो कौन दिखाया जाएगा? पेजेंट है, राइट? तो ये जो सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव है, दैट इज गोइंग टू डीपली परमिएट इनटू the popular arts as well. The same can be said for painting also, drama also, music also, poetry also. ठीक है? हम देखेंगे जब ताज उछाले जाएंगे, तब जब तख्त गिराए जाएंगे, राइट? फैज अहमद फैज फॉर एग्जाम्पल, या फिर जो ऑपरेसिव रेजीम्स हैं उनके अगेंस्ट पोएट्री के थ्रू एडवोकेसी की। फॉर एग्जाम्पल वंस अगेन फैज अहमद फैज, क्या लिखा था उन्होंने? मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, यार एक हल के जंजीर में रख दी है जुबा मैंने, जुबा पे मुहर लग गई तो क्या, कि खूने दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने, राइट? तो जितना भी तुमको मुझे चुप करना है करवा लो, जितनी भी जंजीरों से जकड़ना है जकड़ लो, दी लिंक्स ऑफ द चेन्स दैट यू हैव बाउंड मी विद, मैंने हर उस जर्रे जर्रे में अपनी जुबा रख दी है। दे आर गोइंग टू स्पीक ऑन माई बिहाफ, राइट? So that is the kind of advocacy that is going to be made against oppressive regimes by such scholars, by such poets. ठीक है? So popular culture में सोशल एक्टिविज्म का इमर्जेंस हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव का मतलब हो गया कि ऐसी कम्युनिटीज जो कि अनसर्व्ड रही हैं या अंडर सर्व्ड रही हैं, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, चाहे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, चाहे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, उनके पर्सपेक्टिव से जो इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मॉडिफाई करने का एक्टिविज्म, तो उसको बोलते हैं सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव। तो आप जो लेंस ऑफ परसेप्शन है उसको चेंज कर रहे हो। ठीक है? क्लियर है? तो दिस इज व्हाट वी नीड टू एड्रेस ओवर हियर। शुरुआत कैसे होनी चाहिए? दैट वी हैव ऑलरेडी एड्रेस डेफिनेशन ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। एंड कैसे होना चाहिए? that on the basis of this analysis it becomes apparent that the Great Depression was a major watershed in modern world history, impacting almost every sphere of human life. ठीक है? So that is the note on which we should end our answer. Clear? आगे चलें? लॉन्ग टर्म इंपैक्ट तो हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं। इफ यू वांट टू समराइज दैट, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बट सिंस वी हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड दैट कि कीन्सियन इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस हुआ, मे बी कुछ ऑल्टरनेट मेथड, और अगर रेफरेंस पॉइंट देना है, मतलब दैट ग्रेट डिप्रेशन सर्व्स एज अ रेफरेंस पॉइंट्स फॉर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स। अच्छा, पैंडेमिक से सफर किया तो उसके बाद भी क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ था, जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था तो उसके बाद भी क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ था। तो ठीक है, पंप प्राइमिंग तो वो केन्जियन इकोनॉमिक्स ही है। ठीक है, तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो, तो मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ भी उसको इंटरलिंक कर सकते हो। गुड गुड, यू कैन डू दैट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. Examine the factors responsible for the emergence of totalitarianism in Italy and Germany during the interwar period. तो बताइए क्या हैं फैक्टर्स? सबसे पहला, Treaty of Versailles stabbed in the back myth. The democratic institutions were politically, had the democratic government been a stable one or an unstable one in Italy and Germany after the war, First World War? Unstable the, right? And therefore they were not able to address the important challenges that those countries were facing following the end of the First World War.
what was the public perception with regards to the new dispensations that had taken power after the end of the First World War in Germany and Italy? Unfavorable perception tha, right? Satisfaction ratings were quite low. They felt that either these politicians had stabbed Germany in the back, or while Italy had won the First World War, it had lost the peace. Okay? So it had been betrayed by these same politicians at the Treaty of Trianon. Right? Trianon was the treaty जो कि बल्गेरिया के ऊपर इम्पोज किया गया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इटली वांटेड सम टेरिटरीज ऑन द एड्रियाटिक कोस्ट. ठीक है, यूगोस्लाविया की कुछ टेरिटरीज चाहिए थी उसको, बट ऑल दीज टेरिटरीज वर गिवन टू द न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ यूगोस्लाविया. सो इट फेल्ट चीटेड ऑल्सो. और इसके लिए ब्लेम किसको किया लोगों ने? जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे उनको किया. देन यू कैन ऑल्सो ब्रिंग इन द एंगल ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, राइट? Can also bring in the angle of the policy of appeasement, right? So these were the various factors for the rise of totalitarianism in Italy and Germany during the interwar period. Introduction कैसे लिखना है और conclusion कैसे लिखना है? फैक्टर्स क्लियर है ना, क्या क्या है बताओ एक एक करके. ट्रीटी ऑफ वर्साई, उसके जो हार्श प्रोविजंस थे. The Paris Peace Conference, which was also considered as a major loss of not only prospective gains but also prestige by Italians. The weak democratic regimes established in those countries, the economic suffering happening in these countries, high levels of unemployment, high levels of political recidivism, etc., which the political opportunists, that is the extremists, were able to take advantage of in order to enrobe the youth, enlist their support, etc. The negative propaganda about the democratic regimes, which was conveniently being spewed by the totalitarians, such as the Nazis and the fascists, how? What was allowing them to do that? क्योंकि उन्होंने मीडिया इंस्टीट्यूशंस को पूरा कैप्चर कर लिया था. Why? The industrialists were supporting the extremist groups. Why? Once again, same reason जो कि unification of Italy and Germany में था. क्या? कि अगर strong होंगे तो they will be able to support us. So they wanted the revival of a strong, unified and militarized Germany or Italy. ठीक है, तो negative propaganda भी काफी आसानी से spew कर रहे थे. Then what else? और क्या factors अभी हमने डिस्कस किए? द ग्रेट डिप्रेशन, द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट एटसेट्रा. ये हो गए फैक्टर्स. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहिए? द इंटरवॉर पीरियड विटनेस्ड द इमर्जेंस ऑफ टोटलिटेरियन regimes in Germany and Italy, namely the Nazi government of Hitler from 1933 onwards and the fascist government of Mussolini from 1922 onwards. This was the product of a number of interlinked factors which were typical of the interwar period, right? And then you enlist all the factors. Conclusion क्या होना चाहिए? What was the end result of the rise of totalitarianism? The Second World War. So talk about that. The rise of totalitarianism created a dangerous situation in Europe, which made the Second World War inevitable. Europe had failed to learn from its mistakes and thus was going to experience the disaster of a global war for the second time. Okay? So that is the note on which we can conclude this particular answer. Is this clear? आगे बढ़ सकते हैं? Next question. The Second World War irreversibly altered the nature of the world. Examine its causes and consequences. तो डिमांड बहुत क्लियर है. क्या? Causes of the Second World War and the consequences of the Second World War.
क्या कॉजेज बता सकते हैं हम? Firstly, the germs of the Second World War were contained in the Paris Peace Conference. Instead of creating a framework for enduring peace, the peacemakers at Paris were looking to punish and continue the war against Germany, not with bombs and guns, but through ink and pens. ठीक है, so ये कर सकते हो. और बताइए, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? The rise of totalitarianism in Germany and Italy. और क्या फैक्टर्स? The failure of the League of Nations to seriously pursue the agenda of disarmament and ensuring peace. It was unable to resolve the critical disputes that were causing unrest in Central and Western Europe. What else? और बताइए. The policy of appeasement adopted by the Western democracies towards the totalitarian regimes, Hitler in particular, and Mussolini, Japan, and Spain in general. Right? Now, why were they so hell-bent on following the policy of appeasement? Yes. So the threat of communism played a very important role behind the policy of appeasement. The Western democracies wanted to strengthen countries such as Germany and Italy so that they could emerge as a bulwark against the further spread of communism. What else? The Great Depression. Right? कैसे? It led to the emergence of totalitarian regimes. It eroded the eroded the confidence of the Italian and German populations in the democratically elected regimes. And ये जो totalitarian regimes थी, they wanted to use military methods rather than internationalism in order to fulfill their national objectives. What else? और क्या reason हो सकता है? The foreign policy followed by the totalitarian regimes. What was the nature of their foreign policy? Militaristic policy था सबसे पहला. Secondly, opportunistic policy था. And thirdly, it depended upon the creation of multilateral peacetime military alliances, such as the Rome, Berlin, Tokyo axis, RBT axis. ठीक है? So it was a militaristic, opportunistic, and collaborative policy, through which Hitler and Mussolini were able to lull the Western democracies into a false sense of security while marching on ahead towards the attainment or towards the achievement of their core foreign policy objectives. जो real design है इनके policy के पीछे, that became apparent to the Western leaders
much later. तो तब तक काफी देर हो चुकी थी. Had they been arrested in the beginning, they would never have been able to instigate another major war. But initially, the Western democratic leaders were blinded by the possibility of peace in our times. Okay? This is the Peace in Our Times is the name of the famous speech that was delivered by Neville Chamberlain after successfully concluding the Munich Pact. ठीक है, म्यूनिक पैक्ट में पता है ना क्या हुआ था? क्या चेकोस्लोवाकिया का एक रीजन था सुडेटन लैंड. Sudetenland originally belonged to Germany, but during the Treaty of Versailles, it had been handed over to Czechoslovakia. यहाँ पे 5 मिलियन एथनिक जर्मन्स रहते थे. एंड हिटलर उसकी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव था द आइडिया ऑफ लेबेंसराउम और लिविंग स्पेस, एंड द अदर आइडिया वाज पैन जर्मनिज्म. Now, pan Germanism dictated that the German state should control all those areas where the German speaking people lived, where the Aryans or the Germanic people live. Sudetenland, according to pan-Germanism, should have been part of Germany. Now, he was able to convince the Western leaders, मुझे Sudetenland दे दो, I will stop after that. Otherwise, I am going to invade Czechoslovakia, and जो आपने पूरा framework बनाया है, framework for peace, that is going to collapse. The Western leaders were not willing to engage in a major war for a remote and isolated landlocked part of Central Europe, that is Sudetenland, mountainous region था, right? कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी नहीं था उसका. कोर इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी किसी और कंट्री का इफेक्ट भी नहीं हो रहा था. दे थॉट दैट लेना है तो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एंड ही इनफैक्ट नेविल चेम्बरलिन हु वाज द कंडक्टर ऑफ दिस एंटायर पैक्ट, ही ट्रैवल्ड टू म्यूनिक. वहां पे जो चेकोस्लोवाकियन प्रेसिडेंट था उसको बुलाया, एंड हिटलर के प्रेजेंस में ही फोर्स द चेकोस्लोवाकियन डेलीगेट्स to hand over Sudetenland to Germany. What was Neville Chamberlain's hope? हिटलर सच बोल रहा होगा. सच बोल रहा था? नहीं बोल रहा था. In fact, he was further emboldened in the way in which the Western democracies were ready to roll over for his each and every demand, whether it is a legitimate demand or an illegitimate demand. तो उसका कॉन्फिडेंस जो यहां तक था, अब यहां तक पहुंच गया, right? And now both sides made miscalculations. Why? The Western democracies, because of their aversion of war, their desire to maintain peace, and Hitler because of his overconfidence. तो कुछ ऐसे स्टेप्स लिए दोनों साइड्स ने which pushed Europe closer towards war. Neither side believed कि actual major war हो जाएगा, but war became inevitable with the slow realization of the true designs of it. That is why we are saying militaristic, opportunistic, and collaborative foreign policy of the totalitarian rulers. अच्छा, since the end of the First World War, अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर इमर्ज हुई थी, who was that? The USA, right? But instead of intervening in Europe to tone down the tensions, यूरोप कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा था? The policy of golden isolation or splendid isolation. It said that it did not want to concern itself with external, let us say, tensions. We simply want to live and grow. That was their idea. But this proved to be disastrous. USA once again would be pulled into the war in 1941 after the Japanese attack on Pearl Harbor. So the isolationist policy of the USA, to a certain extent, this can also be blamed for leading to the First World War. Consequences क्या हो सकते हैं? First of all, the emergence of a new world order characterized by bipolarity, Cold War, ideological conflict, etc. यहाँ पे two major superpowers कौन emerge हुए? The USA and the USSR. Secondly, following the end of the Second World War,
Will the old empires be able to survive for very long? Within 10-15 years, all the old empires collapse. So a rapid process of decolonization is going to take place. Thirdly, following the end of the Second World War, renewed efforts would be made in order to ensure peace. जो old idea of internationalism था, will that be considered to be irretrievably lost, or will there be attempts to revive that? Revive. And उसका नया form क्या होगा? The UNO. The sincerity of the world leaders to prevent another world war from taking place, is that going to be more or less as compared to the previous period? More. क्यों? क्योंकि अब जो भी वॉर होगा वर्ल्ड वॉर, दैट इज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर वॉर दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन global annihilation, and therefore the frequency of peace treaties and negotiations, arms limitation and non-proliferation treaties, they are going to increase. These treaties are going to become much more comprehensive. So renewed commitment to peace is going to be made. Does this mean that following the end of the Second World War, no wars would be fought? No. Wars होंगे, but only difference is that जो major superpowers है, they are not going to engage in direct war. Now the war is going to be a cold war, which the USSR and the USA are going to fight against each other through proxies. ठीक है? So proxy wars will continue to destabilize the international politics. Right? Now, since the USA and the USSR have engaged in an ideological conflict, what are they actually trying to achieve in the end? They are trying to establish the supremacy, their political, military, and ideological supremacy over their rivals. How to do that? By converting as many countries of the world into their ideological followers as possible. So USSR will try to convert as many countries to the creed of socialism, while the USA is going to try and penetrate the economies of as many countries as possible and bring about social, economic, and political reforms to align them with its own capitalist economy. Is this clear? अच्छा, अब ये इसको अटेन कैसे किया जाए? हाउ टू कन्विंस समबडी कि आप आइए और हमारी आइडियोलॉजी के साथ सब्सक्राइब करिए. कुछ तो कोर्सिव मीन्स होंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट. ठीक है? मेकिंग your ideology and your system objectively attractive to all the potential subscribers, right? And तो अब ये दोनों जो आइडियोलॉजीज है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, सॉरी कैपिटलिज्म, they are going to align themselves with lofty objectives, such as both are going to project themselves as champions of democracy, gender justice, caste justice, anti-apartheid, anti-colonial regimes, right? Now, कुछ तो चीजें hyperbolic होंगी तो propaganda के लिए, but on the ground level they will also have to make some demonstrable changes also. ठीक है? And as a result, the emergence of all these subaltern movements that is going to start shaping the global politics, economic and social systems. ठीक है? So the rise of subaltern movements.
और बताइए क्या होगा? व्हाट एल्स? नाउ व्हाइल the USA and the USSR are trying to enlist as many countries of the world into their bloc as possible. There are some countries who will try and resist being ideologically captured by either side. और ये लोग क्या करेंगे? They are going to come up with their own grouping. क्या बोलते हैं इसको? The non-aligned movement. Further, to resist the ideological and economic capture by major superpowers, हर रीजन की अलग अलग कंट्रीज क्या करने लग जाएंगी? रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अलायंसेस क्राफ्ट करने लग जाएंगे. फॉर एग्जांपल, द यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा एग्जांपल, और एशियान और सार्क एटसेट्रा. ठीक है. सो रीजनल multilateralism is also going to emerge. ठीक है. आई थिंक करने को तो हम 10-15 और कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करते हैं, बट आई थिंक दीज मेनी वुड बी सफिशिएंट. काम हो जाएगा आपका. क्लियर है? नाउ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन. पहले आपको किसके बारे में बात करनी चाहिए इन द मेन बॉडी, कॉजेज या कॉन्सिक्वेंसेज? कॉजेज. लिंक योर इंट्रोडक्शन विद द कॉजेज. कैसे कर सकते हो? टू मेजर कॉजेज. क्यों दो ही? हमने तो 8-9 बताए, 8 बताए हुए हैं ना. नहीं देखो, अगर इंट्रोडक्शन में आप केवल 2 बोलते हो और लिख रहे हो 8-10, तो एग्जामिनर को लगेगा यार इसके दिमाग में ना, जो भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, इसके दिमाग में पहले से ब्लूप्रिंट नहीं बना हुआ था. प्रॉब्ली ही इज नॉट अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर ऑफ हिज थॉट्स. और अगर आप अपने मन को नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, तो डिस्ट्रिक्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, डिपार्टमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? राइट. सो दैट सेंस अ नेगेटिव, यू कैन से, इंप्रेशन. तो कोई ऑल्टरनेटिव, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 मेजर कॉजेज, राइट दी मेजर कॉजेज. ठीक है. आगे बताओ दी मेजर कॉजेज. बस यही तक सोचा था. हाँ. अच्छा, तो इसको आप समराइज करोगे इंट्रोडक्शन में? नहीं, वो नहीं करना चाहिए. वो नहीं करना चाहिए. बिकॉज यू शुड लेट योर आंसर ऑलवेज अनफोल्ड, अनराइवल बिफोर द एग्जामिनर. ठीक है. शुरू में ही सीक्रेट बता दिया तो उसको पता लग जाएगा कि यार इसी के बारे में बोलने वाला है, व्हाट इज द नीड, कि मैं केवल और केवल हेडिंग पढ़ के आगे बढ़ जाता हूँ. ठीक है. Instead of doing that, try to give an introduction which gives a glimpse of what you are going to talk about in the future without actually revealing the secret. So जो एग्जामिनर है उसका कम से कम इंटरेस्ट तो आए कि आपका बाकी का क्वेश्चन आंसर पढ़े वो. ठीक है. तो हाउ टू डू दैट? फर्स्ट, अच्छा, तो सीड्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर कंटेन्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इससे बेहतर ये है कि आप एक कोट यूज कर सकते हो. Those who do not learn from the mistakes of the past are bound to repeat them. ठीक है. This fits aptly in the development of European history in the first half of the 20th century, which saw not one but two world wars. The major causes for the Second World War are as follows. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद कंक्लूजन. इसको किससे लिंक करना चाहिए, कॉजेज या कॉन्सिक्वेंसेस से? कॉन्सिक्वेंसेस से. कैसे कर सकते हैं भाई? सीधे ये बोल सकते हैं कि भैया देखो, एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज बीन अफेक्टेड. पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, सोसाइटी भी, रीजनल रिलेशंस भी, इंटरनेशनल रिलेशंस भी, सब कुछ. ठीक है.
So profound impact. So once again, जैसे हमने पिछले वाला एंड किया था, it was a watershed movement in modern history. वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते. क्लियर? आगे बढ़े. Number 31. Briefly enumerate the factors responsible for the Cold War. What were its important characteristics? शुरुआत कहां से करनी चाहिए? What do we mean when we use the phrase the Cold War? तो कब से कब तक हुआ? Who were the major powers who were fighting? Basic nature क्या था इसका? ठीक है, कब से कब तक? 45 to 91. Who were the powers? The USA and the USSR. And by its basic nature, what was it? It was an ideological conflict between capitalism and socialism. अब इसके बाद क्या करना चाहिए हमें? We need to talk about the characters या पहले factors? पक्का? दोनों चीजें कर सकते हो यहाँ पर. ठीक है, यू कैन ईदर टॉक अबाउट द फैक्टर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स. दिखाता हूँ कैसे. अगर मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पहले बात करी और फैक्टर्स के बारे में बाद में बात करी, तो आफ्टर एन्यूमरेटिंग द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यू सिंपली हैव टू राइट द लाइन द factors responsible for this new type of conflict were rooted in the immediate history before it began. ठीक है, और इमीडिएट हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं तो कब से? लेट 19th सेंचुरी, इमर्जेंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज, तब से कर रहे हैं. तो उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इट इज ओनली 60-70 years ओल्ड. ठीक है, इमीडिएट पास्ट से. एंड देन यू कैन स्टार्ट टू एनलिस्ट दी फैक्टर्स. अगर फैक्टर्स पहले लिखते हो तो फिर तो वो नॉर्मल हो जाएगा. बट इस तरह के क्वेश्चंस में ना यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. You should have the presence of mind while writing the answer in the examination hall. मान लीजिए आपने एक मिसकैलकुलेशन कर लिया है, जो चीज पहले लिखनी थी वो बाद में लिख ली है, आप फिर भी यू कैन स्टिल सेव द डे और अच्छे मार्क्स आप फेच कर सकते हो एक लाइन लिख के बीच में. ठीक है, सो जस्ट कीप दैट इन योर माइंड. डू नॉट लूज होप व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर्स. ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके? First of all, it was an ideological conflict between capitalism and socialism championed by the USA and the USSR respectively. Global politics was characterized by the element of bipolarity during this period. With the USA and the USSR emerging as the two major poles of world power, trying to enrope all the other countries of the world into their own orbit. Therefore, the Cold War had a strong element of bloc politics. ठीक है, now ultimate objective क्या था and what was the pattern of the conflict? To establish economic, military and political supremacy over the opponent, right? However, the conflict could not become kinetic, especially among the major superpowers, because that would result in mutually assured destruction. And as a result, both sides engaged in psychological warfare. कैसे psychological warfare? To military exercises, development of new arms, trying to make the enemy
military technology obsolete through new military inventions, by establishing new military bases, etc. So what are these people trying to, what are both sides trying to do? For example, अगर टर्की में यूएसए अपने न्यूक्लियर मिसाइल बेसेस एस्टैब्लिश करता है, it is 15 minutes distance from मॉस्को बाय फ्लाइट, तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा? A feeling of uncertainty, a feeling of fear, demoralization. Will Russia or will the Russian leadership be able to stand on the stance that they had taken very strongly, or is their stand going to soften? It is going to soften. They will be ready to make compromises. Okay? That is the idea over here. So psychological warfare was a big element of it. Further, both sides also engaged in subversive activities, trying to weaken their opponents from the inside. कैसे किया जा सकता है ये? स्पाई सिस्टम और प्रोपोगंडा वॉरफेयर. ठीक है, तो एस्पियोनाज एंड propaganda war. You must have seen several films, Tinker Tailor Soldier Spy, etc. The spy who came in from the cold. सब इसी एंगल पे फोकस कर रहे हैं, right? What else? और बताइए. Since neither side could engage in a direct conflict, they would fight through proxies. और बताइए, और क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कोल्ड वॉर का that you can think of? Was it confined to a particular geography, or were the effects of the Cold War felt throughout the world? They were felt throughout the world. केवल दुनिया में नहीं, दुनिया के बाहर भी, right? स्पेस में भी लड़ा जाएगा. Even in those continents where there is not a single person living, वहां पे भी लड़ा जाएगा. कहाँ? अंटार्कटिका में, ऐसी जगहों पर जहां तक आज तक कोई इंसान नहीं गया, वहां के रिसोर्सेज कैप्चर करने के लिए भी लड़ा जाएगा. सच एज नॉट ओनली द मून बट द आर्कटिक रिम. ठीक है, तो इसके लिए भी लड़ेंगे. सब ओशियानिक मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द आर्कटिक रिम, वहां के लिए भी लड़ा जाएगा. सो इट वाज अ ग्लोबल एंड इवन पैरा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट. Would it be fought only with guns and bombs, or also through culture, sports, science, technology? इन सब में भी होगा. So it affected every aspect of human life. तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कोई भी ऐसा अरेना नहीं था दैट वाज लेफ्ट अनटच्ड बाय द कोल्ड वॉर. एंड what is going to be the nature of economic relations and global politics during the Cold War? Will the trend be towards localization or globalization? अच्छा, जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हो बताओ कैसे ग्लोबलाइजेशन? कोल्ड वॉर एज अ प्रोसेस, उसको लीड कौन कर रहा था? द यूएसए एंड द यूएसएसआर. करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? spread their influence, their ideology, their military presence, etc. Right? And thus they will try to cultivate more closer relations with all the other powers of the world. ठीक है, जो लोकलाइजेशन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या आर्गुमेंट दे सकते हैं? In response, many of the concerned nations tried to distance themselves from either the USA or the USSR. Example, इंडिया हो गया, अदर नाम कंट्रीज हो गई. बट स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी किसका हो? लोकलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो हम बहुत फॉन्डली रिमेंबर करते हैं नाम को, बट ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो नाम इन फॉरेन पॉलिसी टर्म्स इज लार्जली कंसिडर्ड टू बी अ फेलियर.
अब वो केवल फॉरेन स्कॉलर्स ही नहीं, इंडियन स्कॉलर्स भी मानते हैं। आप लोग लिख के मत आइएगा, नंबर हो सकता है कट जाए, ठीक है। सो देयर वाज अ मार्क्ड ग्रोथ इन ग्लोबलाइजेशन एज वेल, ठीक है। इज दिस गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन द नेचर ऑफ इंटरनल गवर्नेंस एज वेल? कैसे? International financial, judicial, monetary institutions are going to be established, namely the IMF and the World Bank, the World Court of Justice, the International Criminal Court, many forums and agencies of the UNO are going to be established, right? ये सब होगा. So, international governance is going to experience a major build-up. What about international treaties, arms limitations treaties, disarmament treaties? Their frequency is also going to increase. The comprehensiveness of these agreements, they are also going to increase. जो इस कॉन्फ्लिक्ट के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे? टू डिस्ट्रॉय द अदर कंट्री थ्रू न्यूक्लियर वॉर? नो, क्यों? चाहे आप पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दो, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वो सबने डेवलप कर चुके हैं, न्यूक्लियर ट्रायड एवरीवन पोजेसेस, ठीक है। सो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स भी होंगे, आपका भी नुकसान होने वाला है। एंड बोथ दीज कंट्रीज, द यूएसए एंड यूएसएसआर, हैड क्रिएटेड मोर देन 7,000 bombs each. So the USA had the capability of destroying the world over at least 2 times over, and the Russians probably 5 times over. तो पूरी दुनिया को 5 बार खत्म कर सकते थे, इतना कैपेसिटी उन्होंने डेवलप कर लिया था। So the ultimate objective or the ultimate strategy could not be to destroy the other power. It would be to simply outlast them, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव वॉरफेयर करना है, इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? पैसा होना चाहिए ना। एंड ये पैसा जिसके पास पहले खत्म हो गया, दे आर गोइंग टू गिव अप एटलीस्ट। अपने ओपोनेंट को हराना नहीं है, यू सिंपली नीड टू आउटफॉक्स देम, यू सिंपली नीड टू outlast them. Did America actually lose in Afghanistan, or did the Afghanistan simply survive the Americans? They simply survived the Americans. जीते वो probably एक भी जंग नहीं होंगे except for the last one, काबुल में जो हुआ, but they were able to survive the American invasion, ठीक है। And that is the strategy that was adopted by both these sides. ऐसे conflicts को बोलते क्या हैं? That when you are waiting for the resources of your opponents to be eroded completely, it was a war of attrition, ठीक है। ये हो गए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक आप बात कर सकते हो। Did the Cold War, the objectives of the two powers, the methods that they used, the energy that they deployed, the arenas that they engaged in remain constant, or did they evolve over time? They evolved over time. And Cold War में कोई एक स्टेज नहीं होगा, 5 stages. So it was an evolutionary war, जहां पे गोल पोस्ट हमेशा शिफ्ट होते रहते। ये हो गए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। फैक्टर्स बताओ क्या है? व्हाट वर द फैक्टर्स? सबसे पहले इमर्जेंस ऑफ द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, उसके बाद द बोल्शेविक रेवोल्यूशन,
उसके बाद दी रशियन सिविल वॉर, उसके बाद दी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, है ना। फॉलोइंग दैट the delay by the Western powers, by the capitalist powers to open the second front. हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा इन जून 1941 लॉन्च कर दिया. ही इन्वेडेड द सोवियत यूनियन. सिंस 1942 स्टालिन हैड बीन डिमांडिंग दैट वेस्टर्न फ्रंट को भी ओपन कर देना चाहिए सो दैट द प्रेशर ऑन रशिया कुड बी रिलीव्ड, राइट. हाउएवर, जो नॉर्मंडी का इन्वेजन हुआ वो एक्चुअली होता कब है? इन जून 1944. पूरा 2 साल का डिले. स्टालिन को क्या लगा? व्हाई दिस डिले? द अमेरिकन्स वांट द Germans and the Russians to fight each other, diminish their strength, and they are simply going to come in and sweep everything up. They are going to overrun not only Germany but also the Russians. This is what he felt. Then disagreements between the major powers, that is the British, Americans and the Russians, over the peace conference. तो याल्टा कॉन्फ्रेंस में इंस्टेड ऑफ मेकिंग पीस क्या हुआ? डिसएग्रीमेंट्स इमर्ज होने लग गए. व्हाट डिड स्टालिन वांट? अ माइल्ड ट्रीटी ऑन जर्मनी और अ हार्श ट्रीटी? हार्श ट्रीटी. अमेरिकन्स क्या चाहते थे? माइल्ड ट्रीटी. व्हाट डिड द अमेरिकन्स वांट? कि जर्मनी को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसकी इकोनॉमी को रीबिल्ड करें एंड इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ कैपिटलिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड. रशिया क्या चाहता था? रशिया हैड लॉस्ट 20 मिलियन पीपल, 2 करोड़ लोग, बिकॉज ऑफ जर्मनीज इन्वेजन. इट वांटेड नथिंग बट टू पनिश जर्मनी, रीपे जर्मनी इन इट्स ओन कॉइन. ठीक है. तो दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए. स्टालिन हैड टू फाइनली स्टेप बैक बट ही कैरिड दैट सेम सेंस ऑफ एंगर. हाउ डिड द वॉर फाइनली एंड? With victory in Europe or victory in the Pacific? Victory in the Pacific. How was victory in the Pacific attained? By dropping the nuclear bomb. अब ये जो फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, ओपेनहाइमर, you must have been aware, you must be aware of the level of secrecy with which the nuclear device was developed, right? स्टालिन को बताया गया था कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाए रहे हैं हम? नहीं पता था. एंड why 2 nuclear bombs? Why not a single one? एक था जापानीज का मोराल तोड़ने के लिए, हिरोशिमा पर जो गिराया गया था. The second nuclear weapon was dropped on Nagasaki to tell Stalin ये एक बार का चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार हम बार बार कर सकते हैं. ठीक है. That we have the capacity to manufacture many more of them. बेटा समझ जाओ, थोड़ी तमीज से रहो. ठीक है. Otherwise what has happened to Germany can happen to, Japan can happen to you also. So that is the idea. तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो यूरोप में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन्स और रशियंस के बीच में कोalition बना था, was this a substantial coalition or a coalition of compromises, a coalition of necessity? It was an alliance of compulsion. And as soon as the compulsion ended, the alliance is also going to end. And जो इनके बीच में long term ideological conflict था, that is going to determine the nature of future world politics in the form of the Cold War. ठीक है. Introduction कैसे करना है? That long term factors or the context of the Cold War was created. पहले किसके बारे में बात करनी है हमें? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ना. तो वो तो हमने इंट्रोडक्शन शायद कर लिया था कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, यूएसए एंड यूएसएसआर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, एंड एट टाइम पीरियड 1945 टू 1991. कैरेक्टरिस्टिक बता दिए इसके, फिर उसके बाद फैक्टर्स के लिए बता दिया आपने, एंड देन उसके बाद कंक्लूजन क्या करना है? दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस इट बिकम्स क्लियर दैट द Cold War was inherent in the nature of historical development, right? The emergence of the USA and USSR as major global superpowers had been preordained by historical developments since the previous century, and the relationship between them was always going to be adversarial. That is the note on which we can conclude our answer.
ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32. The Cold War influenced every aspect of human existence. Elaborate. तो दिस क्वेश्चन आई बिलीव कि आप पिछले वाले क्वेश्चन के बेसिस पर एड्रेस कर सकते हो। बताओ कैसे। पॉलिटिकल implications, social implications, economic implications, cultural implications, etc. तो पॉलिटिकल implications, bloc politics, proxy warfare, propaganda warfare, psychological warfare, increasing social tensions, the threat of nuclear war, etc. ये सब बोल सकते हो। social implications, the emerging profile of unserved and underserved communities due to the emergence of subaltern movements, advocacy of liberal organizations, etc. ये सब हो जाएगा। इकोनॉमिक implications क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू कलोनियलिज्म, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग। पॉवर्टी रेट्स के ऊपर कोई मेजर इंपैक्ट पड़ेगा? yes, absolute poverty is going to decline rapidly following this, but relative poverty पहले से बढ़ जाएगा। this is going to be most apparent in the differences between the global north and the global south. what else? within nations जहां पे capitalist takeover हो गया, what is going to happen to inequality? that is going to increase as well, ठीक है। so absolute poverty तो कम हो जाएगा, millions upon millions are going to be lifted out of poverty, but relative poverty and inequality they are going to increase, ठीक है। कल्चर के ऊपर क्या implications होंगे कोल्ड वॉर के? people such as Ian Fleming क्या लिखेंगे? जेम्स बॉन्ड नॉवेल्स, राइट। तो ये सब इमर्ज होने लग जाएगा, जेसन बोर्न का कैरेक्टर इमर्ज हो जाएगा, टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई, ये सब आ जाएगा। तो दैट इज गोइंग टू बिकम अ मेजर थीम। देन रॉकी रैम्बो टाइप की पिक्चरें बनने लग जाएंगी, राइट। वहां पे भी थीम क्या है? कोल्ड वॉर, वियतनाम वॉर का बैकग्राउंड दिया गया है। या फिर रॉकी और आइवन ड्रोगो के बीच में जो बॉक्सिंग मैच, रॉकी 3 है शायद, राइट। आई एम अ बिग मूवी फैन, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया अभी तक, तो मुझे ये सब के बारे में अच्छा आइडिया रहता है। इसके अलावा और बताइए। both these countries are going to make active efforts to export their own cultures. For example, रशिया क्या करेगा? The Bolshoi orchestra, for example, that is going to be transformed into an art form, right? ब्लैक स्वान आप लोगों ने फिल्म देखा होगा, अगेन फिल्म वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। तो ये सब आर्ट्स आई कहां से? रशिया से आए हैं। और अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका यहाँ पे कंप्लीट सिक्सर मारेगा, आउट ऑफ द ग्राउंड। हॉलीवुड, द म्यूजिक इंडस्ट्री, लिटरेचर, ड्रामा, हर चीज में अमेरिका इज गोइंग टू एस्टैब्लिश इट्स ओन टेस्ट। इनफैक्ट फैशन का अब कैपिटल मिलान या पेरिस केवल नाम के लिए रह जाएगा। एक्चुअल डिजाइन कहां पे होने लग जाएगा? न्यूयॉर्क, एलए वगैरह में होने लग जाएगा, राइट। द अमेरिकन जीन्स, डेनिम जीन्स, इट इज गोइंग टू बिकम अ स्टेपल ऑफ वर्ल्ड कल्चर, वर्ल्ड फैशन, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग बैठे हुए हैं, आई कैन बी श्योर दैट एटलीस्ट 60% ऑफ यू आर वेयरिंग डेनिम। अभी पहन के बैठे हो कि नहीं बैठे हो? हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग पहन के बैठे हो। आई वांट टू सी। बस, और नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट हो सकता है कि आप लोग ज्यादा पेट्रियाटिक हो, बट धोती कुर्ता पहन के तो नहीं बैठे ना, वो भी बात सही है, राइट। नाउ, तो कल्चर में देर इज गोइंग टू बी अ मेजर पुश टूवर्ड्स द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर, एंड अमेरिका इसमें कल्चरल टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। what else is going to happen as a result? जो अमेरिकनाइजेशन ऑफ कल्चर है उसके अगेंस्ट भी रिएक्शंस आने लगेंगे।
किस तरह के रिएक्शंस? सेम काइंड ऑफ रिएक्शंस दैट इंडिया हैड एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग द 19th century when the European colonizers had tried to westernize Indian culture, Indian society. तो अब इंडिजनाइजेशन, लोकलाइजेशन, इसके ऊपर फोकस बढ़ने लग जाएगा. इंडिया इज गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट्स सॉफ्ट पावर थ्रू कल्चर एज वेल, मोर एंड मोर अग्रेसिवली. कैसे? साड़ी, योगा एटसेट्रा. लेकिन अमेरिकन यहाँ पे फिर से ज्यादा चालाक निकल जाएंगे. व्हाट आर दे गोइंग टू स्टार्ट डूइंग? कल्चरल अप्रोप्रिएशन करने लग जाएंगे. राइट? योगा है हमारा, लेकिन प्रैक्टिस उनके स्टूडियोज में होता है. राइट? दे आर गोइंग टू ट्राई एंड क्लेम ओनरशिप ऑफ अदर पीपल्स कल्चर. राइट? अच्छा, हाउ आर द अमेरिकन्स गोइंग टू ट्राई एंड रीइंफोर्स देयर ओनरशिप ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड साइंस? कैसे करेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम को स्ट्रेंथन करेंगे. द आइडिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय देम. देखो, इंपीरियलिज्म का हमने हिस्ट्री कल के क्लास में कवर किया था. इट स्टार्ट्स इन द मॉडर्न पीरियड राइट फ्रॉम द 16th century. ऑब्जेक्टिवली एंड कब हुआ? डीकोलोनाइजेशन 40s, 50s, 60s में. दिस वाज द पीरियड व्हेन मोस्ट ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज रिसीव्ड देयर इंडिपेंडेंस. बट इंपीरियलिज्म अभी तक खत्म हुआ नहीं. कैसे? पॉलिटिकल कंट्रोल तो खत्म हो गया है, बट इकोनॉमिक कंट्रोल कंटिन्यूज. एंड अभी इकोनॉमिक कंट्रोल को एक्सरसाइज कौन कर रहा है? द अमेरिकन्स. हाउ? नॉट ओनली IMF, वर्ल्ड बैंक, बट गैट, WTO एटसेट्रा. राइट? वहां पे सारे के सारे रूल्स बनाए किसने हैं? इन्हीं वेस्टर्न पावर्स ने बनाए होंगे. राइट? एंड हमेशा जो भी कॉम्पिटिटर होता है उसको ये पनिश करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चाइना को कैसे पनिश कर रहे हैं? इकोनॉमिक सैंक्शंस, नॉट अलाउइंग द चाइनीज टू वर्क विद अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स. राइट? जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया है. एंड अभी तो ये चाइना के साथ हो रहा है, 10 years डाउन द लाइन ये सेम इंडिया के साथ भी होगा. अमेरिका को पकड़ने का एक तरीका हिंदुस्तानियों ने सोचा, चाइनीज ने सोचा. क्या? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. व्हाट डिड अमेरिका डू टू दैट? कागज फाड़ के फेंक दिया. ठीक है? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. जहां पे उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने की बात आती है, दे आर नेवर लुकिंग टू डू दैट. एक्सपेक्ट क्या करते हैं? दैट दे आर नॉट ओनली गोइंग टू बी द रूल मेकर्स बट द इन्फोर्सर्स ऑफ द रूल. फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ बिटवीन जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रम्प. मे बी आप लोगों ने उसमें से कुछ शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे. राइट? बट दे स्टिल हैव द गॉल टू से दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. मेरा कहना है भाई, पहले अपने यहाँ पे देख लो, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे देखना. राइट? बट हुआ क्या है? दैट दे हैव बिकम द नॉट ओनली द जजेस बट ऑल्सो द पुलिसमैन ऑफ द. क्लियर है? एंड ये सब हुआ कैसे? बिकॉज दे वन दिस वॉर. कौन सा? द कोल्ड वॉर. क्लियर है? सो आफ्टर द कोल्ड वॉर एक नया पीरियड इमर्ज हुआ, नोन एज द पीरियड ऑफ यूनिलैटरलिज्म और अमेरिकन हेजेमनी, ऑल्सो नोन एज पैक्स अमेरिकाना. ठीक है? अब अमेरिका जहां चाहे जिस देश को किसी भी रीजन की वजह से इन्वेड कर सकता है. इट इज विथ कंप्लीट इम्प्यूनिटी. It did the same to Iraq in 2003, Afghanistan in 2001. हाँ, कुछ एक्सक्यूजेस दे देंगे कि वॉर ऑन टेरर चल रहा है, वॉर ऑन ड्रग चल रहा है एटसेट्रा. इराक को क्यों इन्वेड किया था सेकेंड गल्फ वॉर में? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. मिले कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? नहीं. इधर केमिकल वेपन्स नॉर न्यूक्लियर वेपन्स. Iran did not even possess, Iraq did not even possess its own centrifuge to enrich uranium. ठीक है? बट अमेरिका के ऊपर कोई एक्चुअल ब्लोबैक आया इसका? नहीं आया. ठीक है? एक्सेप्ट फॉर माइनर स्कर्मिशेस, हो सकता है कुछ डोमेस्टिक टेररिज्म के एपिसोड्स इमर्ज हो गए हों, बट हैड एनी अदर कंट्री ट्राइड टू डू दिस, व्हाट वुड हैव हैपेंड? द एंटायर वर्ल्ड वुड हैव कम टुगेदर इन ऑर्डर टू suppress those ambitions, to suppress that country. But America is able to pursue it with complete impunity. ठीक है?
एंड साथ में वो बोलते क्या है, दैट वी आर द लैंड ऑफ द फ्री एंड द होम ऑफ द ब्रेव, राइट? दैट हम जब कहीं पे इन्वेड करते हैं, वी आर नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू कॉन्कर दैट कंट्री. क्या बोलते हैं? वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड democracy to that country, right? And it is this intellectual, you can say, hegemony that they have been able to construct that is symptomatic of the American age, the Pax Americana. And उसको facilitate किसने किया? इसी कोल्ड वॉर में विक्ट्री ने. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है न्यू कॉलोनियलिज्म, अमेरिकन हेजिमनी एटसेट्रा, दिस शुड कम इन दी कंक्लूसिव पोर्शन ऑफ योर आंसर, राइट? उसके पहले आपको बाकी के एस्पेक्ट्स, तो हर एस्पेक्ट में, तो यानी कि साइंस में, स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड बाद में आफ्टर द कोल्ड. ठीक है, शैल वी मूव अहेड? Question 33. China was always grand, but she had grown old and tired. It required a blood sacrifice to restore her vigor. So, what is this question about? Revolution and civil war. Exactly किन aspects के बारे में बात करनी है about the Chinese revolution and civil war? The causes and consequences we need to highlight, और वो कैसे करेंगे? Can we address the causes and consequences in the context of this particular question without addressing the picture of China on the eve of the Chinese Communist Revolution? नहीं कर सकते हैं. तो चाइना जस्ट बिफोर द रेवोल्यूशन, उसकी हमें पिक्चर यहाँ पे बतानी है. बताओ क्या हाल था चाइना का? ठीक है, 19th सेंचुरी में चाइना हैड बिकम part of global empires. In fact, it was not part of a single global empire, but multiple global empires. चाइना में उसके बाद भी एक एम्परर रहेगा at Beijing, but he would not actually exercise any real power. He would be controlled by many different powers, such as the Russians, the Americans, the British, the French, the Germans, etc. तो चाइना को किसी तरबूज की तरह ये लोग अलग अलग हिस्सों में काट लेंगे, ओवर विच दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश देयर इनडायरेक्ट रूल. चाइना वुड बी डिवाइडेड इनटू दीज यूरोपियन कंट्रीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेचर ऑफ दीज यूरोपियन इंटरवेंशन इन चाइना? इकोनॉमिकली क्या इंपैक्ट पड़ेगा चाइना के ऊपर? डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे जाएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ होने लग जाएगा, पॉवर्टी, फैमिन एटसेट्रा, दिस इज ऑल गोइंग टू इंक्रीज. पॉलिटिकली क्या इंपैक्ट पड़ेगा चाइना के ऊपर? वॉर्स की फ्रीक्वेंसी अब कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी. व्हाई? बिकॉज दीज डिफरेंट यूरोपियन पावर्स विल ट्राई टू सेटल देयर स्कोर्स in China. So China is going to become a playground for these different European powers. All right. तो कल आप लोगों की एमएमपी की क्लास नहीं होगी, संतोष सर इज नॉट अवेलेबल. 5th को क्लास होगी, 5th जुलाई को एनवायरमेंट की क्लास होगी. ठीक है, राइट. तो व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट? हाँ, चाइना, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? China is going to be flooded with foreign goods, the native industry, handicrafts, that is going to be destroyed. There is going to be mass unemployment, and there is going to be one commodity produced in India, consumed in China, which is going to destroy the social fabric of China. क्या? Afim, right? Made out of the poppy flower. तो poppy flower की जो cultivation है अपने गोरखपुर से गाजियाबाद वाले रीजन में होती है, एंड दिस वाज एक्सपोर्टेड टू चाइना. तो पूरे के पूरे चाइना को अफीमची बना दिया अंग्रेजों ने, राइट? एंड फिर इसके बाद होगा क्या? आर द चाइनीज पीपल गोइंग टू सिट एंड टॉलरेट? नो. With Western rule, some ideological and cultural changes are also going to start taking place.
Yeah, same thing that happened in India, in other colonized countries. There is going to be a bid for modernization, for democratization. The idea of nationalism and anti-colonialism is going to emerge. And they are going to not only oppose British rule, but also the imperial political system of China. ठीक है? ये था पिक्चर ऑफ चाइना जस्ट ऑन द ईव ऑफ रेवोल्यूशन. तो हम ये यहाँ पे इसको डिस्कस करके क्या बता दिया है, that China had grown old and tired. Earlier, she used to be the sun around which the entire planetary system of Asia used to revolve. But in the 19th and 20th centuries, she had lost her old vigor. ठीक है? अब क्या जरूरी था? अब ब्लड सैक्रिफाइस वाज नेसेसरी. और ब्लड सैक्रिफाइस क्या होगा? A long period of war beginning in 1911, ending finally in 1949. ठीक है? क्या क्या कवर होगा इसमें? The period of warlords, the Chinese Communist Revolution, the Chinese Civil War, and the Second World War. Period of warlords, (1912 to 1928), Chinese Communist Revolution, (1928 to 49), Chinese Civil War, दो phases में, 1928 to 1937, 1945 to 1949. And Second World War, although it started in the world in 1939, China में it started with the general invasion of China by Japan in 1937 itself. Before that, 1931 में नॉर्दर्न चाइना, जो नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, मंचूरिया वाला प्रोविंस है, वहां पे उन्होंने इन्वेड कर दिया था. तो 1937 to 45. Do we need to discuss the circumstances and developments that took place during this period? No. We need to talk about the consequences. End में हुआ क्या? After this entire period, what happened? Outcome क्या हुआ? The Chinese Communist Party led by Mao Zedong established China as a communist one-party country. ठीक है? And now what do we need to show? How this was able to restore her vigor. So, क्या होगा? First of all, some immediate reforms are going to be introduced in order to address the pressing concerns, such as large-scale famine, the prevalence of a large number of communicable and non-communicable diseases, shortage of essential commodities, lawlessness on a mass social scale, etc. इन सबको address करने के लिए क्या किया जाएगा? Redistribution is going to take place. The state is going to come in order to distribute food grains. Local communes are going to be set up. Food kitchens are going to be established. Policing के लिए army is going to be deployed, etc. These kinds of things. Then the
intermediate reforms, once the basic survival needs of the people have been fulfilled, फिर क्या किया जाएगा? What is the Communist Party going to do? क्या रिफॉर्म्स लेकर के आएगा? हेल्थ, एजुकेशन, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन, इन सब चीजों के लिए एफर्ट्स करना शुरू करेगा. बेयरफुट डॉक्टर्स प्रोग्राम, प्राइमरी स्कूल्स को फ्री इम्पार्ट करना, आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ द rural population with the socialist intellectuals through propaganda means, through newspapers, and active engagement with the rural population by sending political agents into the villages, setting up of communes of farmers, etc. ठीक है, ये सब इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स होगा. लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स, क्या देख सकते हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, and secondly the cultural revolution. Okay. What was the great leap forward? It was China's attempt to rapidly industrialize itself. Mao Zedong ने क्या promise किया? That we are going to industrialize at such a blinding pace that we are going to surpass even Britain, which had by this point of time an almost 2-century long tradition of industrial production in terms of the production of high quality iron and steel. ये promise किया कि 10 साल में ब्रिटेन को ओवरटेक कर लेंगे. What was the strategy used? क्या स्ट्रैटेजी था? कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनाने हैं या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज से आयरन प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है? नहीं, कॉटन प्रोडक्शन से. कैसे होगा ये? 6000 विलेजेस में 6000 मेटल फाउंड्रीज लगाई जाएंगी. ऑल दी विलेजर्स आर गोइंग टू बी गिवन पर्टिकुलर टारगेट्स कि आपको हर महीने इतना आयरन और इतना स्टील प्रोड्यूस करना है, राइट? हाउएवर प्रॉब्लम क्या था? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, मिनरल इंडस्ट्री वाज अंडर डेवलप्ड, रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा था, कोल था नहीं. तो व्हाट डिड द पीपल स्टार्ट डूइंग? They started melting down their own pots and pans, utensils, the agricultural implements, etc. Right? अब वो मेल्ट करने के लिए फ्यूल भी नहीं है, तो फ्यूल कहाँ से आएगा? अगल बगल के जंगल काट डाले पूरे के पूरे, राइट? तो दैट हैपेंड. तो क्वालिटी ऑफ स्टील प्रोडक्शन है, वुड दैट बी वेरी हाई? नहीं होगा, तो दैट फेल्ड. उसके एक्सटर्नैलिटीज क्या थी इस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के? लोकल एनवायरनमेंट वाज कंप्लीटली डिप्लॉयड, and since the people were engaged in the production of iron and steel, they were simply melting down their agricultural implements. Agriculture के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? Agriculture also collapsed. तो किसी अकलमंद ने ये बोला, सुझाव दिया कि एग्रीकल्चर इस वजह से कोलैप्स हो रहा है क्योंकि जितनी भी सॉन्ग बर्ड्स हैं वो जब दाना डालते हो तो सारा चुप के चली जाती हैं. तो व्हाट डिड द चाइनीज पीपल स्टार्ट डूइंग आफ्टर दिस? They started killing all the birds, songbirds, right? And फाइनली हुआ क्या इसकी वजह से? What is the position that songbirds occupy in the agricultural environment? क्या niche occupy करती हैं? They are predators and pollinators, right? तो predation किसका करती हैं? Small insects, pests का, right? So they keep the fields healthy and pollinate करके वो germination process को aid करती हैं. What was the end result? जो agriculture collapse हुआ था, that is going to completely end. End result क्या हुआ ग्रेट लीप फॉरवर्ड का? कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के बेसिस पर 2 करोड़ पीपल डाइड. जो और ज्यादा अग्रेसिव एस्टिमेट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दोज 6 करोड़ पीपल डाइड. तो 1 to 3 times द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक बार में माओ ने 2 साल के पीरियड में ही खत्म कर दिया. ठीक है, अब घर पे होने लग गई निंदा, कड़ी निंदा, गालियां पड़ने लग गई माओ को. सो हाउ टू ओवरकम दिस इंटरनल प्रॉब्लम?
एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। खामियाजा कौन भुगतेगा 1962 में? इंडिया भुगतेगा, राइट? सो चाइनीज नेशनलिज्म में there is one very important difference as compared to traditional nationalism or traditional socialism. So it is socialism plus a very strong sense of nationalism. Okay? And China from this point onwards is going to start and assert its own national aspirations in the form of economic, political and territorial claims. तो वो केवल इंडिया से पंगा नहीं लेगा, उसके जितने भी नेबर्स हैं इंक्लूडिंग रशिया, द फिलीपींस, वियतनाम, द वेरियस कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, सबसे पंगा ले लेगा. इट हैज ऑनगोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद ऑल ऑफ देम, राइट? अच्छा, कल्चरल रेवोल्यूशन क्या? नाउ after the failed experiment of the Great Leap Forward, there was a great degree of dissatisfaction from circles within the Chinese Communist Party. People wanted a change in leadership, right? Mao did not want that. क्या बोला इसने? कि now there should be an open reckoning. This is the time for reconciliation, truth finding, etc. तो पब्लिक मीटिंग्स करवाई एंड सबको बोला कि आप आइए और पार्टी को क्रिटिसाइज करिए, आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, राइट? प्लान क्या था उसका? टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन मेरे अगेंस्ट आके पब्लिकली बोल रहा है, राइट? एंड फॉलोइंग दैट व्हाट ही डिड वाज एक्चुअली इविल. क्या किया इसने? छोटे छोटे बच्चों को ही स्टार्टेड टू लेट्स से ब्रेन वॉश देम. सबके हाथ में एक लाल किताब पकड़ा दी कॉल्ड द लिटिल रेड बुक. दीज वर द म्यूजिंग्स ऑफ माओ जेडोंग हिमसेल्फ. एंड ऐसे जो भी लोग जो कि चाइना को मॉडर्नाइज होने से रोक रहे हैं, जो चाइना में एक्चुअल रेवोल्यूशन लाने से रोक रहे हैं आइडियोलॉजिकल सेंस में, दोज हु आर relying upon Western ideology, Western academics to criticize the Chinese Communist Party, उनको क्या करना है? एक्साइल कर दो या फिर एलिमिनेट कर दो. दैट इज द आइडिया. सो ऑल द इंटेलेक्चुअल्स, वही जो पढ़ा लिखा आदमी है वही ना क्रिटिसाइज करेगा. ऑल द इंटेलेक्चुअल्स वर ईदर साइलेंस्ड और दे वर एलिमिनेटेड. ठीक है? रिजल्ट क्या होगा? जितनी बच्ची कुची इकोनॉमी थी वो भी चौपट, राइट? अब इसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस माओ साहब चल बसेंगे, ठीक है? एंड अ न्यू बिगनिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस. क्या होगा? नया लीडरशिप जो आएगा, is that going to insist upon the same policy of aggression and Cold War as followed by Mao? No. Now it is going to try and cultivate better relations with the Western world. The Chinese are going to begin engaging in what they called ping pong diplomacy. Ping pong किस स्पोर्ट को बोलते हैं? टेबल टेनिस. rapprochement with the West. True? Ping pong diplomacy. The American presidents Ronald Reagan and his wife Nancy Reagan visited China in 1972 and a number of economic agreements were signed. Sorry, नाम गलत ले लिया. Richard Nixon traveled to China. A number of economic agreements were signed. And following this, China adopted a policy of economic liberalization. राइट? एंड उसके बाद से चाइना का इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे, ठीक है? सो विद इन 40 years of that period, China had grown from, I believe, $100 billion economy to an $18 trillion economy. ठीक है? तो इस शॉर्ट पीरियड में. एंड
ये जो 1971-72 की बात कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी सेम लेवल पे हुआ करती थी, बट टुडे चाइनाज इकोनॉमी इज 6 टाइम्स। इंडिया का इकोनॉमी कितना है? 4 ट्रिलियन डॉलर्स के अराउंड है। चाइना का इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर्स, तो अबाउट अ फैक्टर ऑफ 5 टाइम्स उससे बड़ा है। वाई? बिकॉज दे हैड अ 20 ईयर लीड ओवर इंडिया व्हेन इट केम टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसका रिजल्ट क्या हुआ है? चाइना हैज बीन एबल टू रिस्टोर हर विगर, गेन इट्स प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस, लेकिन उसके पीछे ब्लड सैक्रिफाइस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अभी जो 1912 से 1970 का पीरियड है, इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू अननेचुरल कॉजेज more than 70 million people have lost their lives in China. तो conservative estimate, great leap forward में 20 million people, 2 crore people, the cultural revolution में another 1 million people, the various wars that they fought, about 50 million people, right? So that is the idea that over here. Is this clear? तो blood sacrifice चाहिए था। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बना तो देता है, सोचता नहीं है कि भाई कौन से तांत्रिक से बनवा के आए, स्टूडेंट देखेगा तो परेशान हो जाएगा, राइट? खून की बलि देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल्ड वॉर क्रिएटेड अ लेगेसी ऑफ पेन एंड नोवेयर वाज दिस पेन more acutely felt than in East Asia. Which country are we talking about over here? वियतनाम तो साउथ ईस्ट एशिया में है, अफगानिस्तान तो सेंट्रल एशिया में है, हार्ट ऑफ एशिया। कोरिया की बात हो रही है, ठीक है? ईस्ट एशिया में हम यूजुअली चाइना, कोरिया और जापान को गिनते हैं, फिलीपींस को भी हो सकता है गिनने। तो कोरिया में कोल्ड वॉर ने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कैसे किया? कोरिया had been one of the major theaters during the Second World War, right? यहां पर किसका रूल चल रहा था? जापान का, since 1910, and the Japanese had further enhanced their position and used Korea as a base to invade initially Manchuria and then later South China as well. ठीक है? What happened after the war? नॉर्थ से किसने इन्वेड किया? द चाइनीज एंड द यूएसएसआर ने। साउथ से किसने इन्वेड किया? द अमेरिकन्स ने, और बीच में जाकर के मिल गए, ठीक है? तो ऑन द मैप ये चाइना का अपेंडिक्स जो निकला हुआ है यहाँ पे, दिस इज कोरिया, राइट? एंड यहां पे communists established their influence, and over here the capitalists established their influence. ये जो बीच में लाइन है, this is the 38th parallel north. Clear? What is going to happen over here? ये जो डिवीजन है, it was supposed to be a temporary one, ठीक है? War had ended in 1945. The Americans had withdrawn their troops by 1947, and the Soviets were also supposed to withdraw their troops as well. The UN had already passed a resolution to conduct a free and fair elections to elect a new democratic government for the whole of Korea. ठीक है? However, नॉर्थ में एक लीडर इमर्ज हुए, किम इल संग। अ कम्युनिस्ट बाय कन्विक्शन एंड अ गुंडा बाय प्रोफेशन, राइट? इन्होंने किसको कन्विंस किया कि सपोर्ट करिए हमें? यूएसएसआर और चाइना को। क्या प्रॉमिस किया? कि पूरे के पूरे कोरिया को अपने हाथ में ले लेंगे, एंड फिर यहां से वी आर गोइंग टू अटैक द रियल फोर्ट्रेस ऑफ कैपिटलिज्म इन ईस्ट एशिया। कौन? जापान।
ठीक है, चाइनीज और सोवियट्स को आइडिया अच्छा लगा, दे सपोर्टेड हिम. The Americans had already withdrawn and retreated back to Japan by this point of time. ठीक है, there was a very strong anti-war sentiment among Americans also. कि भाई अभी एक वॉर लड़के निकले हैं, दूसरा वॉर नहीं बच पाएगा, right? However, the American president, along with his foreign policy advisor and foreign secretary, John Forster Dulles, they came up with a doctrine known as the Truman Doctrine. क्या बोलता है ट्रूमन डॉक्ट्रिन? That the politics of the world is based during the Cold War period on a theory known as the डोमिनो थ्योरी. क्या है? पिज्जा खिला के इन्फ्लुएंस बढ़ाना है? नहीं. तो एक गिरेगा तो बाकी भी कोलैप्स कर जाएंगे, राइट? तो इफ वी अलाउ नॉर्थ कोरिया टू फॉल और कोरिया टू फॉल अंडर कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन, सो इज गोइंग टू बी द केस विद जापान. फिलीपींस के साथ सेम होगा, साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी सेम होने वाला है. मे बी इंडिया ऑल्सो कोलैप्सेस आफ्टर दैट. फिर उसके बाद जो कोर कैपिटलिस्ट रीजन्स है सच एज ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एटसेट्रा, दे आर गोइंग टू बिकम द न्यू फ्रंटियर फॉर द कोल्ड वॉर स्ट्रगल. तो बेस्ट क्या है कि जहां पे भी कम्युनिस्ट अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे उसको कंटेन करना है. सो दे केम अप विद द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, राइट? एंड अमेरिका began deploying troops in South Korea from 1949 onwards. So America returned in 1949, 1 year after it had left. Now, other reasons why Truman had decided to intervene was that he did not want to repeat the mistakes of the past. क्या? लीग ऑफ नेशंस को यूएस ने बैक नहीं किया, दैट कोलैप्स्ड. क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, राइट? तो ही वांटेड टू back the UNO. The Western democracies accepted the illegal and illegitimate demands of people such as Hitler and Mussolini, followed a policy of appeasement, tolerated the annexation of first Sudetenland, then the whole of Czechoslovakia by Hitler in 1938, along with another whole set of other territorial violations. Truman believed that if we repeat the same mistake, if we allow the Russians to establish their own regime in North Korea, we are once again going to be following the same policy of appeasement. And this is going to push the entire world towards the Third World War. Okay? So he did not want to follow the policy of appeasement. Further, after the Second World War, America had established, or during the Second World War, America had established a long chain of naval bases all along the East China and South China Sea. फिलीपींस में जापान के जो आइलैंड्स हैं वहां पर इन्होंने अपने 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 मिलिट्री बेसेस एस्टैब्लिश कर लिए थे. What is going to happen to all these military bases if the Russians are given access to the whole of the Korean peninsula? They could be easily targeted. Okay? And the American military position in the East Pacific could be threatened.
And what if East Pacific felt? What is on the other side of the Pacific Ocean? USA, California, Oregon, etc. Right? So it was, in fact, this line of military fortifications, naval bases, was the last line of defense against direct communist, you can say, threats. So it would have not only threatened the American military position in the East Pacific, but even the American mainland. And therefore, he decided to intervene. What happened after the American troops landed in South Korea? The war began. Okay? How long did it last? 3 years. End result क्या था? Did any side secure a clear victory? No, it ended in a stalemate. Did either the Americans or the Soviets gain anything substantial from this war? No. So there were no discernible gains. But नुकसान हुआ कि नहीं? Yes. The war proved to be extremely costly. And सबसे ज्यादा costly किसके लिए था? The Korean people. The cost of war was the heaviest for the Koreans. Human cost, 40 lakh people dead, 5 million people displaced, almost the entire young generation, the young male population aged between 16 and 22 years, that was almost wiped out. Further, कोरिया का सिचुएशन बिफोर द वॉर वैसा ही था जैसा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. ठीक है, लोगों को अपने घर छोड़ के एक से दूसरी जगह पे भागना पड़ा. घर तो छूटे ही, रिश्तेदार भी छूट गए, अपने कब्रें भी छूट गई, मज़ारे भी छूट गए. तो दे कोरियन पीपल experienced a very strong sense of alienation from their own land. ठीक है, so major psychological impact was also felt. So there was a major psychological trauma as well. Clear है? Political cost, क्या है इस वॉर का? It resulted in the permanent partition of Korea. Was any peace treaty signed between the North and the South? No. In fact, the two halves of Korea even today officially exist in a state of war. तो जंग जो active conflict, a kinetic conflict that ended in 1953, but अभी भी they are in a state of war. So perpetual conflict. Further, the Korean Peninsula became an active stage for the expression of proxy war. Did this proxy warfare end with the kinetic phase of the war in 1953, or does it continue even today?
continues even today, right? So political instability was induced due to the continuation of the proxy status of both halves of Korea. Further, जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, who were the powers involved? Major powers. USA on one side, on the other side USSR. कोरियन वॉर जब तक खत्म हुआ तब USSR was now added to China. China became a new entrant. जैसे यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए नेटो बनाया, से चाइना को कंटेन करने के लिए सीटो बनाया जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. On the whole, the creation of the CETO, was this beneficial for international security or did it destabilize the world even further? It destabilized the world even further. क्यों? इसके मेंबर्स कौन कौन थे? पाकिस्तान भी था इसमें. पाकिस्तान का ट्रेडिशनल एनिमी कौन? इंडिया. तो पाकिस्तान की जेब में अब आ गए पैसे, हाथ में आ गया मिसाइल और आसमान में उड़ने लगा जहाज, राइट? सबसे पहले टारगेट किसको करेंगे? इट वॉज सपोज टू बी अ वॉच टावर टू कंटेन द ग्रोथ ऑफ चाइना, बट इट बिकेम अ वॉच टावर अगेंस्ट इंडिया. ठीक है, तो इट ऑल्सो destabilized the South Asian region. एक जंग पहले लड़ चुके थे, 3 जंग इसके बाद होंगे. ठीक है, ये हो गया पॉलिटिकल कॉस्ट. इकोनॉमिक कॉस्ट क्या? इकोनॉमिक डेवस्टेशन ऑफ बोथ हाफ्स ऑफ कोरिया. साउथ कोरिया में क्या देखने के लिए मिलेगा? रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी और स्लो इकोनॉमिक रिकवरी. रैपिड. हाउ? विद अमेरिकन कैपिटल एंड जापानीज टेक्नोलॉजी. और नॉर्थ कोरिया में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, while at the end of the Korean War, North and South Korea were divided only politically and militarily. 10 years later, they were also divided economically. Economically की वजह से culturally also, right? Further, और क्या इकोनॉमिक कॉस्ट होगा इसका? नॉर्थ कोरिया में सिंस नेटिव प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस वेरी स्लोली, तो नॉर्थ कोरियन के इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? सब्सिडी सपोर्ट. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम दी यूएसएसआर. चाइना तो वैसे ही उस समय काफी गरीब था, तो वो कर नहीं सकता था, तो यूएसएसआर वाज सपोर्टिंग इट. व्हाट वुड हैपन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर इन 1991? China is going to assume some of the responsibility, but not all of the responsibility. China is still a developing country. USSR was a developed country during the Cold War itself. वो ज्यादा सपोर्ट कर सकते थे.
व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट? 1991 के बाद से नॉर्थ कोरिया का पॉपुलेशन क्या होगा? इट इज गोइंग टू डिक्लाइन. कितना डिक्लाइन? 1991 से 2019 तक रफली 40%. ऑल्दो कोई जानता है नहीं कि एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं. नॉर्थ कोरिया इज नोन एज द हर्मिट किंगडम, तो इट हैज सेक्लूडेड इटसेल्फ, कोई भी बाहर इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है. बट मोस्ट स्कॉलर्स एस्टिमेट दैट 40% of their population has been decimated since 1991 due to the loss of Soviet economic support. ठीक है. So population collapse in North Korea due to shortage and poverty. साउथ कोरिया में क्या देखने के लिए मिलेगा? बिकॉज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बर्थ रेट्स आर गोइंग टू कम डाउन वेरी वेरी रैपिडली. शुरुआत में तो इंक्रीज होंगे एज प्रोडक्शन ग्रोज, बट एज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग कंटिन्यू टू इंक्रीज, द बर्थ रेट आर गोइंग टू डिक्लाइन शार्पली. करेंटली टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? 1.25 आई थिंक, ऐसा कुछ है. रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? 2.1. तो ऐसे ही चलता रहा तो बाय 2021 साउथ कोरिया में भी आपको हिंदी बोलने वाले लोग ही मिलने वाले हैं. राइट. तो वाई? बिकॉज द कंट्री इज गोइंग टू बी एंटायरली डीपॉपुलेटेड. तो पॉपुलेशन कोलैप्स इन साउथ कोरिया एज वेल ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ. कोल्ड वॉर नहीं होता तो ना अमेरिका पहुंचता, ना जापान पहुंचता यहाँ पे, ना यूएसएसआर पहुंचता, ना ये सिचुएशन क्रिएट होती, और ना ही ये पॉपुलेशन कोलैप्स होता. ठीक है. So that is what we need to highlight. The Cold War created a legacy of pain, and nowhere was this pain felt more acutely than in East Asia. हो जाएगा. आगे बढ़े. Question number 35. The struggle for decolonization by the Vietnamese people was taken over by superpowers. Discuss. बताइए, what do we have to talk about? How Vietnam, following its independence, became an arena for Cold War proxy warfare. कैसे हुआ ये? Vietnam, before its independence, before the Second World War, was a colony of France. During the Second World War, it became a colony of Japan. French ने क्या किया? They simply packed their bags and ran away, leaving the Vietnamese to defend themselves. They left the Vietnamese to their own devices. What was the Vietnamese experience during Japanese occupation? Mass killings and brutal exploitation. Vietnam in 1941 was a country of 20 million people, 2 crore population. By the time the Japanese occupation ended in late 1944, early 1945, its population had been reduced by 10%. तो 2 million लोग जापानीज ने मार दिए थे, either directly or through famine or through deprivation, etc. Right? Do you think that the Vietnamese people would welcome the French back to rule over them once again? नहीं, कहा कि भाई चले गए थे तो गए ही रहो. But the French had the audacity to try and come back and reclaim their lost colony in 1946. ठीक है. अब by the time that the Second World War rolled around, the Vietnamese had already started to try and make themselves independent of French control. तो यहाँ पे भी बाकी देशों की तरह एक नेटिव नेशनल मूवमेंट और कम्युनिस्ट मूवमेंट इमर्ज हो चुका था. And these people are going to lead the fight against the French once they come back. एक बहुत लंबा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चलेगा फ्रॉम 1946 टिल 1944. ठीक है. 1944 में द फ्रेंच आर फाइनली गोइंग टू एडमिट डिफीट एंड दे आर गोइंग टू साइन अ पीस अकॉर्ड नोन एज द जेनीवा अकॉर्ड्स. ठीक है. नाउ इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जीता कौन था? Was it the democratic side? Was it the
conservative side or the socialist side that had won? Socialists had secured a victory. They also had very close relations with China. China से during the war of independence arms import हो रहे थे, लोग ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे थे, etc. लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था चाइना. अब इस सिचुएशन को कोई और कंट्री बैठ के देख रहा था. कौन? द यूएसए. Would the USA allow Vietnam to become a red corner of the world map? नहीं. वो क्या बोलेगा कि हमारे हिस्से में आना चाहिए. And the same thing that would happen in Germany, in Korea, would now once again happen in Vietnam also. क्या कि एक हिस्सा वियतनाम का आ जाएगा अंडर कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन, एक हिस्सा आ जाएगा अंडर कैपिटलिस्ट ऑक्यूपेशन. लाइक द कोरियन वॉर, रशिया और चाइना अपने ट्रूप्स नहीं भेजेंगे. नेटिव पीपल आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द अमेरिकन्स, बट अमेरिकन्स बाय द एंड ऑफ द वियतनाम वॉर will have amassed roughly 5 lakh American soldiers on the ground. ठीक है. So this was the biggest military deployment done by America post the Second World War. तो इतना military deployment आज तक उन्होंने नहीं किया है since then. Right? And this is how it became part of the struggle between superpowers. What were both sides trying to do? They were trying to prevent the other ideology from succeeding over here. अच्छा, यहाँ पे होगा क्या? जो international agreements हैं, are they going to be followed or will they be violated? They'll be violated. Geneva Accords will be violated. For example, जो democratic elections का process था, will the external powers allow that process to take place in a free and fair manner, or will they try to intervene? They will try to intervene. जो वहां पे regimes हैं, are the external powers going to tolerate them or will they try to change the regime? regime change करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जो साउथ वियतनाम का एम्परर था बोदाई, he was forced to resign, forced to abdicate, and his prime minister, his name was Ngo Dinh Diem. I know कि गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ. NGO DINDHEM. Now he was elected as, or he was chosen as the candidate to rule over South Vietnam by the Americans. क्या गारंटी दिया इसने? Am I going to accept the result of the free and fair elections or am I going to reject that? रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि पता था कि नॉर्थ वियतनाम जो वियतकॉन्ग फोर्सेस हैं, हो ची मिन, ही इज फार मोर पॉपुलर. ठीक है. तो अमेरिकन्स back in 1950 they had emerged as the protectors of the international order. अब की बार कैसे इमर्ज होकर के आएंगे? As violators of the international order. ठीक है. So violation of the UNO and its resolutions was not something that only the Soviets or the Chinese engaged. दोनों साइड करते थे. ठीक है. एंड हम देखते क्या है कि हमेशा जीत किसकी होती है? जो यूएनओ के साइड वाला है, जो यूएनओ के अगेंस्ट वाला है. जर्मनी में यूएनओ को साइड वाला, कैपिटलिस्ट की जीत हुई. कोरिया में कैपिटलिस्ट की जीत हुई. दे वर एबल टू प्रिवेंट द होल ऑफ कोरिया फ्रॉम कमिंग अंडर सोवियत ऑक्यूपेशन. एंड वियतनाम में कम्युनिस्ट की जीत हुई. तो those who have violated the UNO in proxy war, UNO's resolutions in proxy warfare, have largely found themselves on the losing side. ठीक है. But this is not always the case. For example, Arab-Israel war, right? वहां पे नहीं होता है. Question है, the struggle for decolonization by the Vietnamese was taken over by superpowers. Discuss. तो इसको address कैसे करना है? Introduction में क्या लिखना चाहिए हमें? The struggle of the Vietnamese had been going on since 1939. Since 1941, when the Japanese occupied them. Finally, in 1945, the Japanese were repelled, but their struggle continued because the old colonial French governors tried to reclaim their lost cause, resulting in a major or a long war of independence 1946 से लेकर 1954. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ में you come to the main part of your answer, that the French finally admitted defeat and negotiated the Geneva Accords
with the Vietnamese, with the Viet Cong in 1954, according to which free and fair elections were to be conducted in Vietnam. However, before these elections could be concluded, America intervened since it did not want the communist North Viet Cong to come to power in Vietnam. Okay? And this is how the independence struggle for Vietnam became part of the Cold War equation. The war continued from 1965 till 1973, resulting in almost 2 million casualties in Vietnam once more. So once again, a very costly affair. Finally, the Americans had to withdraw themselves, resulting in Vietnam emerging as a socialist nation in 1973. That is going to be your answer. Coming to the next question. The problems of the Middle East are to a large extent an outcome of competing nationalisms. Analyze. Why this question? अभी चल रहा है वो तो चलो ठीक है, बट वाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वाई कंपीटिंग नेशनलिज्म के एंगल से इसको परसीव करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है आपसे? बिकॉज दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज बिन अ वेरी मिसअंडरस्टूड वन. ठीक है, जनरली क्या परसेप्शन होता है जब अरब्स और इजरायलीज के बीच में, ज्यूज के बीच में लड़ाई होती है? दैट इट इज अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट. बट ऑब्जेक्टिवली अगर इसको एनालाइज करें, व्हाट वी फाइंड इज दैट द इजराइल पैलेस्टाइन इशू is born out of competing nationalisms. First is the Israeli Jewish nationalism, and the other is the Arab national. ठीक है. नाउ ये जो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, has this been a culturally homogeneous region historically speaking, or an extremely heterogeneous region? Extremely heterogeneous region. This was the crossroads between great civilizations of the world. एक साइड पे इजिप्ट है, दूसरी साइड पे रोम है, दूसरी साइड पे चाइना है, पर्शिया है और इंडिया है. तो यहाँ से अलग अलग लोग आकर के मिलते थे. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे इतने सारे रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज का इमर्जेंस होता है, इतने सारे साइंटिफिक आइडियाज का इमर्जेंस होता है, राइट? एंड देयरफॉर व्हेन following the end of the First World War, क्या होता है? The Jews begin migrating to the region of Palestine in large numbers. They are held by the British and the French, who control the region of Palestine and Syria, right? But this time around, the attitude of the locals is very different from the previous periods. पहले तो एक्सेप्ट करते थे आउटसाइडर्स को, अब क्या होगा? They are not going to be so welcoming. Why? Because by this point of time, Arab region में भी the idea of nationalism has started to emerge. ठीक है? This was the period of the growth of Arab nationalism. And with the rising British backed
migration, the anti Jewish settlement, Jewish sentiment started to become stronger. Why? Because the native Arabs looked at the newcomers as competitors. ये लोग यहाँ पे आ रहे थे, इनको सरकार लैंड असाइन कर रही थी, they were establishing their own financial institutions, they were capturing the sparse resources that were available to the native people. Native people felt that they were being edged out of their own traditional homeland, जो कि Arabs थे. Further, this process was further complicated. How? This was also the period for the growth of Jewish nationalism. लेट 19th सेंचुरी में एक मूवमेंट शुरू हुआ था known as Zionism, right? Now, the idea of Zion is a biblical concept. Zion for the Jews represents the promised land. ठीक है, जो उनके पैगंबर साहब थे मूसा और मोसेस, he had said that my followers are going to be taken to the promised land. वो लेजेंड है that he had parted the Red Sea और इजिप्ट के जो फैरोज थे उनसे बचा करके अपने फॉलोअर्स को he had taken them to a region known as Canaan. वो कैनान वाला रीजन वही है जो कि आज पैलेस्टाइन वाला रीजन है. ठीक है, तो इन दी Old Testament and in the Jewish memory, this region of the Levant was their promised land. During the late 19th century, एक idea emerge हुआ that the Jewish people are simply not a religious community. They are in fact a political community. They should have, or they are a complete nation unto themselves, and they should have their own nation state. तो nation state कहाँ पे बनाया जाएगा? वही कैनान वाले रीजन में, पैलेस्टाइन वाले रीजन में, फ्रॉम द रिवर टू द सी. आप लोगों ने ये सब नारे सुने होंगे, राइट? तो दिस वाज आल्सो द पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ Jewish nationalism. And what is going to be their attitude towards the native Arabs? Friendly or hostile? Hostile. क्या perception रखेंगे about the natives? That these are interlopers, that they have illegally occupied our traditional homeland. ठीक है, this is going to be the idea. And to further prove that ये कोई religious conflict नहीं है, rather it is a conflict that emerges out of competing nationalisms. What is the, or what are the major issues that both sides are fighting over? किसके लिए लड़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव मटेरियल फैक्टर्स के लिए लड़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिकग्निशन. दैट दूसरी साइड केवल ये मान ले कि हमें एग्जिस्ट करने का राइट है, दैट आवर साइड इज अ लेजिटिमेट वन. इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे नेशन स्टेट की भी जगह है. तो म्यूचुअल रिकग्निशन के लिए लड़ रहे हैं. और किसके लिए लड़ रहे हैं? लैंड के लिए लड़ रहे हैं और टेरिटरी. और किसके लिए लड़ रहे हैं? वाटर के लिए लड़ रहे हैं. Those people who have been displaced, they are fighting for their right to return. What else are they fighting for?
for preservation of their own language and culture. That in both states, the minority population should enjoy equal protections, equal rights, and equal opportunities. That people of both sides should have equal access to and control over the main cultural center of that region. क्या है? Jerusalem. These are the important issues that they have been fighting. Okay? What has been the nature of the conflict? Has this been a bilateral conflict between two nation states or a multilateral conflict between several nation states? Multilateral conflict. Why? एक साइड पे है Zionist nationalism और Jewish nationalism represented by Israel, और दूसरी साइड पे है Arab nationalism represented by various Arabic states such as Palestine, Egypt, Iraq, Syria, Lebanon, Jordan, etc. ठीक है? So the nature of the conflict also suggests that the basic contradiction is one of competing nationalisms. Further, the way in which the most prominent solution has been presented, that also convinces us that the nature of the conflict is one of competing nationalism. क्या है इसका जो often suggested solution है? The two-state solution. It suggests that the conflict is largely political. Now, will it be correct to say that competing nationalism is the only factor for this conflict, या फिर other factors भी हैं? Other factors भी हैं, but these are secondary factors. ये आग लगाने का काम नहीं करते हैं. They are simply acting as accelerants. लगी हुई आग को और ज्यादा भड़काते हैं, right? So you need to tell the examiner that while the conflict is basically one of competing nationalisms, some other factors are also responsible. क्या है ये other factors? रिलीजन, तो ये हो गया. और बताइए. बट ये मेजर फैक्टर ये नहीं है, इनफैक्ट इसको नीचे लिखना चाहिए. कल्चरल डिफरेंस तो नेशनल आइडेंटिटी का पार्ट हो जाता है, तो वी हैव ऑलरेडी एड्रेस दैट. और बताइए क्या है. यस, तो
इकोनॉमिक कंपटीशन इस रीजन में इकोनॉमिक कंपटीशन किस चीज के कंट्रोल के लिए होता है? ऑयल एंड एक्सेस टू दी सुएज कनाल। ठीक है। Who are the major powers interested in the oil resources and the navigational routes of this region? बड़े वेस्टर्न पावर्स, कैपिटलिस्ट पावर्स, वो किस कंट्री को एज देयर वॉच टावर यूज करते हैं? इसराइल को। ठीक है। बिकॉज इसराइल एंजॉयज द बैकिंग ऑफ द मेजर यूरोपियन एंड अमेरिकन पावर्स, तो उसका जो पॉलिसी है टुवर्ड्स द अरब्स इज दैट अ माइल्ड वन और अ वेरी अग्रेसिव वन। कायदे में नहीं रहते, वो गुंडागर्दी करते हैं, तो रिएक्शन आता है इसके अगेंस्ट। ठीक है। फर्दर हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं। सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या शुरू हुआ ग्लोबल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने वाला फिनोमेना? कोल्ड वॉर। एंड द मिडिल ईस्ट, स्पेशली द इजराइल एंड पैलेस्टाइन रीजन, this was a major arena of the Cold War with the Americans backing the Israelis and the Soviets backing the Arabs. ठीक है। और जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है, ऑल्दो कोल्ड वॉर इनहेरिट हो गया है, लेकिन अपनी जो जनरेशनल दुश्मनी है उसको इन्होंने इनहेरिट कर लिया है। फर्दर और क्या फैक्टर है? रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। मिडिल ईस्ट वाले रीजन में जो रीजनल सॉरी हेवी वेट्स हैं वो कौन कौन है? Iran and Saudi Arabia, right? Both of them are trying to increase their influence over the different countries in the Middle East, right? Saudi Arabia किस तरह का पॉलिसी परस्यू कर रहा है towards the Israelis? A conciliatory policy, right? It is trying to mend its relations. ईरान किस तरह का पॉलिसी फॉलो कर रहा है? ऑपोजिट। ठीक है। सो इट इज परस्यूइंग एन एक्सट्रीमली हॉस्टाइल पॉलिसी। एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग? जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज ब्लीडिंग ओवर इनटू द अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। ठीक है। तो ईरान वर्सेस दी सऊदीज। फाइनल हम दलील दे सकते हैं कि जब दो सेट ऑफ लोग 100 साल के लिए लड़ते हैं तो लड़ाई ही, जंग ही उनके आइडेंटिटी का मेजर पार्ट बन जाता है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। वन ऑफ द जस्टिफिकेशन गिवन इज रिलीजन। तो 7 अक्टूबर को फॉर एग्जाम्पल जो रेड लॉन्च किया हमास ने, क्या नाम दिया उसको? टीयर्स ऑफ अल अक्सा एक्सेट्रा। ठीक है। सो कॉम्युनल रेटरिक यूज किया जाता है बाय बोथ साइड्स इन ऑर्डर टू justify their you can say aggression, their brutality, and to retaliate against it also. ठीक है। Further, the same religious justification is also given to sustain this conflict. Why are people interested in sustaining this conflict? इकोनॉमी के लिए बेहतर है भाई, जब भी जंग होती है तो इकोनॉमी ऊपर जाता है। वाई? प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, राइट? दैट इज वन एंगल। बट वो अगर आप बोलते हो तो इट वुड सीम अ लिटिल बिट सिनिकल, तो ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम दैट। इतने सारे आपको मिल गए हैं, दिस शुड बी मोर देन इनफ। ठीक है। ऑलराइट। तो कंक्लूड कैसे करना चाहिए इसको? दैट व्हाइल competing nationalism appears to be the primary factor for the enduring nature of the Arab-Israel conflict, other factors also play a secondary role. However,
it should never be mistaken that the conflict is a religious, economic, or regional conflict. It is essentially a nationalistic conflict in which other factors play a contributing role. ठीक है, तो ये सेंटिमेंट आपको वहां पे कन्वे करना क्लियर है. तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. एनी डाउट्स? नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, any doubts? Anything I can help you with? तो अलग क्वेश्चंस के लिए मतलब अलग टॉपिक्स के लिए आप जो पुरानी एनसीईआरटी होती थी क्लास 9 वाली वर्ल्ड हिस्ट्री की, वो एक बार देख के चले जाओ. और अगर वो नहीं मिलती है तो इट हैज बीन रिप्रिंटेड इन अ टेक्स्ट बुक फॉर्म. ओरियन ब्लैकसॉन आई थिंक पब्लिश करता है, अर्जुन देव, इंदिरा अर्जुन देव का. ठीक है, तो वो देख के चले जाइए. नॉर्मल लो वगैरह भी आप पढ़ सकते हो, बट उसको पढ़ने का ना इतना फायदा होगा नहीं आपको. पढ़ना बहुत ज्यादा होगा, क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आएगा एक. तो इट इज बेस्ट कि कम एफर्ट से जितना ज्यादा रिटर्न मिल पाए. ठीक है, ऑल्दो वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल द मेजर एस्पेक्ट्स. ऑब्वियसली पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं कवर कर सकते हम 3 दिन में, बट मेन पर्पज वाज कि आपको आंसर लिखने का आइडिया मिल जाए और एक क्विक रिवीजन हो जाए. दैट आई बिलीव कि हो गया है. ठीक है, तो उसके मैं आपको मॉडल आंसर दे, वो अब कर नहीं सकते हम, टाइम भी नहीं है और मेरे पास एनर्जी भी नहीं बची है अब करने की. ठीक है, चलिए देन, थैंक यू फॉर योर टाइम. ऑल द बेस्ट गाइज.